Hello, hello, hello. Welcome back, Almighty Sports Plus पर. Yes, Almighty Sports Plus पे. I think it's been a couple of days since we are back. लेकिन obviously, it's a European night. Of course, it's not a Champions League night, no pun intended. लेकिन यार Europa League भी हम cover करते हैं, like we have done last season as well. और इस season में और भी मौका मिल रहा है because lot of things are left in the Premiership and other competition. तो वो अभी pending है. लेकिन big night for Manchester United. और ये important match क्यों है और इसलिए हम कवर कर रहे हैं बिकॉज अगर आप ग्रुप देखो ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्रुप में यू वुड हैव सेड कि नहीं थोड़ा सा बनाना स्किन है, आप बोलोगे एट मैक्स. लेकिन इन माय ओपिनियन भाई इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रियली रियली क्लोज इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगेन यू कैन नॉट रूल आउट रियल सोसाइटी एनी डे बिकॉज रियल सोसाइटी दिखाया यार ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स दे हैव रियली मतलब इंप्रूव्ड एज अ साइड, बहुत इंप्रूव किए. लेकिन आप देखिए यहाँ पे ग्रुप शेरिफ, और फॉर पीपल हु रिमेंबर लास्ट टाइम क्या किया था शेरिफ ने लास्ट सीजन पागलपंती किया था. दैट इज बेसिकली अ मोल्डोवन साइड हु एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री. सो यू नेवर नो, दे हैव समटाइम्स एक होता है ना जस्ट एक नॉट एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर. वहां पर मे बी दे कैन गेट ओवर वन मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉट जस्ट दैट दे आर at home. I know they don't have a proper home. Sheriff is not like really एक होम फैन बेस नहीं है उनका, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे न्यूट्रल्स आज शेरिफ के साइड लेंगे. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. नो प्रॉब्लम मोदित, आई सी योर मैसेज एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जो भी देख रहे हैं होपफुली आप लोग सब लोग ला दे एब्सोल्युटली. और अखिलेश बहुत दिन हो गया भाई आपको देखे हुए, बहुत अच्छा लगता है ऑलवेज व्हेन यू हैव people still supporting who have been supporting from right from the beginning. Again, Akhilesh is one of them, so thanks a lot Akhilesh. Means a lot. Of course Akhilesh, a Barca fan in the house. हमने बात की थी about Barca during the watch along, but obviously आज भी हमने बात किया था on Almighty Blues FC. So people who did not get a chance to watch that क्योंकि हमने पिक किया था the best and the worst kind of moments or teams, as well as जो भी बहुत सारे talks about UCL in the week. लेकिन अभी यार कमिंग बैक टू यूरोपा लीग, लेट्स सी द लाइनअप्स. और लाइनअप्स इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का. अगेन आई वोंट क्लेम कि मैं शेरिफ के बारे में बहुत जानता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो मच. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन आप सब लोग बोलेंगे यार कम ऑन रोनाल्डो नॉट इन यूरोपा लीग प्लीज. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए वी गॉट टू रेस्पेक्ट द गोट्स यार. फॉर देम इट्स नॉट अबाउट मतलब देमसेल्व्स, इट्स अबाउट the larger picture. It's about basically what they can do. Okay, Akhilesh is a United fan. Okay, I always thought you're a Barca fan. Yeah, Akhilesh, पता नहीं for whatever reason. चलो nice. Jarin in the house as well. Papa Bhattacharya also. भाई ये टीम ने पिछले साल रियल मैड्रिड को हराया था, याद है ना? बिल्कुल. एंड वही है इस बार भी they've got a win under their belt. First match victory रहा है. Yes, not against United, लेकिन फिर भी they have beaten one side, so you never know. Is it lucky for Manchester United? Because again, the group that they were in last time in Champions League, that is, I'm talking about Sheriff, they actually beat Real Madrid, and Real Madrid went on to win the Champions League. So who knows? I don't know. You guys, Manchester United fans, आप लोग बोलिए, what do you all think? And again, I think they beat Omonia, जो सिप्रियन साइड है, राइट, इन द फर्स्ट मैच. चलो कोई नहीं. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आज बाय चांस अगर ड्रॉप करती है ना पॉइंट्स, इमेजिन दे विल बी थर्ड इन द ग्रुप यार. दे विल बी थर्ड इन द ग्रुप एंड दैट इज व्हाट दे रियली डोंट वांट. दे वांट एक मोमेंटम. ऑब्वियसली लेट्स बी रियलिस्टिक. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रीमियर लीग में आई डोंट सी देम कंपीटिंग फॉर द टाइटल एट ऑल, एंड नॉट इवन फॉर द टॉप 2. आई वुड से डेफिनेटली टॉप 4 फाइट है. Yes, बाकी कॉम्पिटिशन है, लेकिन फॉर मी दिस कैन बी एक यूरोपियन ट्रॉफी वेल दे कैन विन, हु नोज. बट पीपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइनअप? थॉट्स ऑन Casemiro? Again, for me, Casemiro not starting yet again is a surprise. I have to say it's a surprise. I would say Derain, because yes, it's Europa League. Ronaldo शुरू कर रहे हैं, as well as basically McTominay and Eriksen, who has actually done well. Let's give credit to them as well in the recent past. ठीक है. I remember the Arsenal game, for example. काफी सारे मैचेस थे जहां पर they did quite well. लेकिन come on man, Casemiro आप साइन किए हो and still you're not able to give him starts. बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए. Yeah, it's a big deal. Absolutely, it's an away game. Absolutely, we will join United soon. अरे फरहान नहीं यार, come on. come on. मतलब अभी भी चांस है. फरहान पता नहीं आप थे क्या दूसरे स्ट्रीम में, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में हमने रिव्यू किया था अबाउट चेल्सीज परफॉर्मेंस, अबाउट पॉटर बॉल.
लेकिन हाँ, फॉर पीपल हु मिस्ड आउट, डू चेक इट आउट लेटर इन द नाइट यार. मतलब काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था. प्लस हमने बाई जनता जनार्दन के वोट्स के साथ we kind of selected the best 11 for the week as well. So a lot of moments as well हमने बात किया है. But come on people, looking at this lineup, क्या लग रहा है prediction? और मैं आपको बेंच भी दिखाता हूँ वापस से in case you missed out. Obviously सेंटर हाफ पार्टनरशिप यूनाइटेड की काफी अच्छी लग रही है अभी इन माय ओपिनियन. यस, मैंने खुद एमिलियानो मार्टिनेज से बोल रहा हूँ भाई, लिसांड्रो मार्टिनेज को मैंने खुद एक्चुअली नहीं दिया था इतना क्रेडिट इन द फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स, बट ही हैज कम बैक. वाओ, ही हैज कम बैक रियली स्ट्रांग. और मलेशिया, समवन हु नोज यूरोपियन कंपटीशन, हैविंग प्लेड फॉर फाइनल, आई नो इट वाज कॉन्फ्रेंस लीग लास्ट सीजन इफ आई रिमेंबर राइट, लेकिन फिर भी आई थिंक मलेशिया नोज यूरोपियन कंपटीशन. लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो, of course Anthony bhi, obviously he played Champions League with Ajax, so European experience hai, so I think pretty much you would expect them to be winning the game. I think the most important factor Sancho rahega mere liye, because one thing is I believe Sancho has not been picked for England. Is it for real? मैंने check नहीं किया, but I saw the headlines कि Sancho has not been picked for England, so maybe एक होता है ना, मतलब this is a chance, a night to prove everyone wrong, maybe he gets a hat trick, who knows. लेकिन हाँ, again Garnacho, someone up you are looking forward to as a United fan to see. I know that Langa kind of unlucky almost. That'll be interesting. लेकिन yeah, interestingly I don't see Mason Greenwood on the bench. Yeah, there were reports that Mason Greenwood might be on the bench. Nahi? Matlab, I don't know if I read some wrong reports, but anyway, Fred is on the bench. Zidane Iqbal, wow. Harry Maguire, of course, Luke Shaw. तो अगेन काफी स्ट्रॉन्ग बेंच है. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि अगर आप लोग को पता है बोल दीजिए यार, शेरिफ के प्लेयर्स, इफ यू गाइस विल बी ग्रेट टू एक्चुअली नो दैट. लेट्स सी, अंकित डिलीट वन, बालक और माटा. ओ वाओ. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हो यार आप, डरेन भाई, बिग अप आपको. लेकिन यार देखिए, फॉर मी अगेन इट्स अ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रीम, सो सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, लेकिन आई लव वन माटा टू द कोर. हैविंग सेड दैट, बालक, आपने अगर देखा है मेरा स्ट्रीम, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वॉच अलोंग विद फतेह आई वाज डूइंग, और मैंने ऑल टाइम मेरा पर्सनल चेल्सी 11 पिक किया है, उसमें बालक है. तो बालक भाई डेफिनेटली आई कैन नॉट डिलीट माटा अनफॉर्चुनेटली, ओनली बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला है. आई नो इट वाज नॉट हिज मिस्टेक, बट अगेन आई नो कल भी मैंने डिलीट किया था उसको, बट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इन दैट एरा एब्सोल्युटली. जल्दी यूरोपा की रिंगटोन फोन में. ओह माय गॉड गौरव, नो पन इंटेंडेड यार, कम ऑन भाई. मतलब अगेन यूरोपा लीग हम भी जीते हुए यार 2 बार चेल्सी, तो वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट एब्सोल्युटली, एंड यू नेवर नो, यू माइट बी बैक अगेन. Casemiro was scrappy against Sociedad. Currently, there's no reason to bench McTominay. हाँ, that's a good point. लेकिन वही है ना, अब स्टार्ट कर रहे हो यार, Casemiro, you expect more from him. लेकिन एक गेम, after just one game, you have kind of dropped him. I don't agree to that as well, Akhilesh. I think, or maybe आप बोल सकते हो that they are just waiting for Casemiro to be unleashed in the Premier League, because at the end of the day Premier League में top 4 is the main thing, right? मतलब that's the reality of it. Again मैं अगर fixtures list देखूं for Manchester United, again Manchester United का Leeds का game I think postpone हो गया, तो I don't think they have anything this weekend, तो इसीलिए मैं ज़्यादा surprised हूँ with Casemiro not being there. We have 100 record in Europa. अंकित भाई, ये बेलिंगम के लिए रियल लिवरपूल जा रही है, बहुत सुन लिया, अगर सिटी ले गई तो क्या चांस है सिटी का? यू नो व्हाट, कैल्विन फिलिप्स आज तक बॉल भी किक नहीं की है भाई, जहां तक मुझे मालूम है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गौरव, कम ऑन भाई, कैल्विन फिलिप्स को पहले बॉल तो किक करने दो. आई नो डिफरेंट पोजीशन है, नॉट एग्जैक्टली सेम प्लेयर्स, बट यू हैव टू गिव देम अ चांस. तो आई थिंक गोइंग टू सिटी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग. यस, यहाँ पर उड़ती उड़ती खबर आया भाई, सिटी माइट गो फॉर रफाइल लियाओ, बट अगेन आई वोंट रीड टू मच, क्योंकि ट्रांसफर विंडो अभी तक यार खुला नहीं है. बाय द वे, स्कोर प्रेडिक्शंस पीपल, मैच इज गोइंग टू स्टार्ट in just a few seconds, so everyone in the chat आ जाइए score predictions के साथ. Sheriff, Manchester United, I'm still calling a United win. Yes, it's very essential आज का दिन, लेकिन I can see Sheriff scoring. Yes, despite इतना strong defense जो रहा है Manchester United का, I can see Sheriff scoring, because Sheriff को जो मैंने देखा था in the European competition last season. So I am going with Sheriff scoring 1 goal, but Manchester United coming back and scoring 2. So 1-2 I'm going. Okay. Fair enough. Gaurav, Greenwood is registered in under 21 squad. Okay, fair enough. Thank you. Everyone in the chat, क्या बोलो? Darren is the CEO of deleting players. Oh my God, good one, man. Mujit. अरे सूरज भाई, सूरज कैसे हो भाई? Nice to see you as always, bro.
अगेन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन यार, सब लोग ये चीज भूलिएगा मत, थम्स अप है, लुकाकू नहीं, दिस इज द थम्स अप बटन, so please hit that. More people will come. Havertz has a potential to become the next Balak. हाँ वही यार, पोटेंशियल ही है, बट ऑनेस्टली इज नॉट डूइंग इट इवन 10% अभी के लिए, सिंपली पुट। अभी से यूरोपा देखने की तैयारी। ओह माय गॉड सूरज। भाई चेल्सी फैन नहीं हमें बैंटर करने लगे तो क्या ही तो हो गया यार, मतलब नहीं, लेट्स सी मैन, अभी भी टाइम है। अगेन हम तो कवर करते हैं यार यूरोपा लीग भी, आई नो नॉकआउट ज्यादा कवर करते हैं, लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, तो आई थॉट लेट मी कवर इट टुडे। व्हिच इज द बेस्ट टीम फॉर बेलिंगहम, लिवरपूल, सिटी, चेल्सी और रियल? आई फील पर्सनली, ठीक है, पर्सनली मुझे लगता है एन ऑलराउंड मिडफील्डर चाहिए चेल्सी को ज्यादा आज के दिन में, तो आई वुड गो विद चेल्सी यार। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट, नो बायस, यहाँ पर सिंपली पुट लिवरपूल का इसलिए मैंने बोला क्योंकि मुझे लगता है लिवरपूल को चाहिए एक प्योर डीएम जो राइटिश साइड खेले हेंडरसन वाले पोजीशन में, विच आई डोंट सी बेलिंगहम डूइंग, तो वो ज्यादा नेसेसरी फॉर लिवरपूल। रियल मैड्रिड मतलब वहां तो कैसेमीरो का बैकअप चाहिए एट बेस्ट, और ही इज डेफिनेटली नॉट अ बैकअप। चौमनी इज गुड टू स्टार्ट, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कामाविंगा भी काइंड ऑफ विल गो बैकवर्ड्स, ही विल ओनली इंप्रूव फर्दर, तो दैट्स द ओनली रीजन। तो उसको गेम टाइम भी ज्यादा मिलने वाला है चेल्सी में यार, चेल्सी में आई कैन सी बेलिंगहम स्टार्टिंग। अरे व्हाट अ बॉल मैन, व्हाट अ बॉल भाई, शेरिफ का जो सेंटर हाफ है बढ़िया बॉल दिया टू द फॉरवर्ड, लेकिन आई थिंक दे जस्ट अबाउट डिफेंडेड, दैट इज लिसांड्रो मार्टिनेज। 2-1 टू शेरिफ, वाओ। पिकफोर्ड के साथ साउथगेट को भी उड़ा देते, मजा आ जाता। oh my god, 3-1 to United, Akhilesh बोल रहे interesting. Do you think Pickford should go to bigger team? uh, you know what, I don't think so yaar, because I don't see Pickford ka distribution being so good. I think it's more about his short stopping, correct me if I'm wrong. Again, there are better distributors out there, bigger team mein you need better distribution, you need more ball playing compared to a Pickford. Smaller teams or other mid table or relegation threatening teams को ज्यादा शॉर्ट स्टॉपर्स चाहिए, तो जहां पर वहां पर पिकफोर्ड ठीक है यार। चावल बेलिंगम दोनों ले लो। चावल तो शायद ही आने वाला है यार, अभी मुझे नहीं लग रहा आने वाले, मतलब लैम्पार्ड के अंदर तो 100% लग रहा था, देन टूकल के अंदर थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन अभी देखते हैं पॉटर द वे ही प्लेज, आई रादर फील दैट कसेडो और एडसन अल्वारेज विल कम। अरे दाविड डिया क्या कर रहे हैं भाई, प्ले टॉकिंग अबाउट प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, दाविड डिया शुड हैव जस्ट किक्ड इट आउट, आई डोंट नो व्हाट वाज ही डूइंग, almost kind of gave the position away. Again, good press by Sheriff, I must say. Who should Real Madrid take in next transfer window? Sauradeep, big up यार, बहुत दिन हो गए देखे हुए आपको, nice to see you as always. Again like कर देना सौरदीप। रियल मैड्रिड को जैसे मैंने बोला ना, they need a Casemiro का बैकअप in my opinion, because Casemiro is left, तो चोमनी का बैकअप in other words, right? That's what they need. हाँ, Valverde can do a job, Camavinga, Valverde together can do a job, of course. They have some youngsters as well. Like in my opinion, I would certainly go with a defensive midfielder. Right winger, the reason I'm not saying, because I think Rodrigo, Valverde और Asensio और मतलब तीनों रोटेटर का अच्छा करते हैं यार। राइट बैक भी नहीं जा रहा, क्योंकि अगेन व्हेन फिट कारवाल स्टार्ट्स, तो कौन सा कोई वर्ल्ड क्लास राइट बैक होगा जो विल बी ओके टू गो देयर। बाय द वे, मलेशिया विद अ फ्री किक कंसीडर्ड, लुक्स लाइक बेलिंगहम वुड बी अ मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग। हाँ बाय द वे, बेंजिमा का बैकअप अगेन वो इजी नहीं है, इसलिए मैंने शाउट आउट नहीं दिया, बिकॉज लाइक बेसिकली कारवाल ना, सबको पता है जब फिट है बेंजिमा कारवाल शुरू करेंगे, तो बैकअप दे विल कम ओनली इफ दे वांट मनी यार टू रियल मैड्रिड, और दे वांट रियल मैड्रिड टैग, तभी आएंगे। बेलिंगहम वुड बी अ मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इफ वी एंड अप गेटिंग हिम। मोस्ट एक्सपेंसिव, डू यू थिंक सो? या प्रॉब्ली। सच्चाई वही है। चूज वन, 100 फॉर राइस और 100 फॉर बेलिंगहम। ओ मैन, ओके, द रीजन वाई मैं जाऊंगा, अगेन बेलिंगहम इज अ बेटर प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई वुड गो फॉर 100 फॉर राइस। द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज चेल्सी का फिजिकल एलिमेंट थोड़ा कम है आज के दिन में, अगेन कैप्टेंसी लीडरशिप वो थोड़ा कम है, तो वहां पर मैं जाना चाहूंगा कैरेक्टर्स, और आई थिंक राइस इज अ बेटर कैरेक्टर एज मच एज बेलिंगहम हैज दैट great ambition, clearly he'll go right to the very top. Jamal Musiala, Bellingham for me probably are better midfielders than many in the world, that people say that, again a lot of बढ़िया youngsters है यार overall, लेकिन I think Bellingham and Jamal Musiala are next level. लेकिन राइस मेरे लिए, because अगेन हमारे पास वो फिजिकल एलिमेंट नहीं है, आई डोंट सी लॉफ्टस-चीक स्टार्टिंग एनी गेम्स नियर फ्यूचर। Benzema backup will be Mbappe only in 2024. Well, again, he'll just replace him, but they need a second striker, in my opinion. Hazard, as much as I love him, I don't see that role played by him.
Carval is old. They should splash on young. अरे Carval old नहीं बोलूंगा यार. Come on. By the way, एक और फ्री किक देते हुए यार. भाई मलाशिया, you have to be careful, boss. You have to be a little bit careful. दानी कारवाल का कितना एज हो गया? 30 years. Come on, 30 is nothing. Especially La Liga or Champions League. Again, no disrespect. He can definitely manage it. Or he's not someone who started, at that level at 18 like a Wayne Rooney. So he'll go on till about 34, I feel. Carval. Okay, I think striker, right winger चाहिए मैड्रिड में. एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी. अरे कोई नहीं यार. या डेफिनेटली आप देखते होंगे बट कमेंट नहीं किया. बट अगेन पीपल, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. हम बात करने वाले बहुत सारा चीज और हम बेस्ड ऑन द मैच होपफुली गोल्स हो, होपफुली ब्लैंड नहीं हो, एकदम फ्लैट नहीं हो मैच. दैट इज द ओनली थिंग आई एम होपिंग बिकॉज हाँ, जनरली हम जब करते हैं यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग 2-3 मैचेस साथ में कवर करते और थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है. ठीक है, साथ साथ में अरे शेरिफ इज अ नाइस क्रॉस. लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक और मैच जो चल रहा है वो है लाजियो का. राइट, करेक्ट. लाजियो का क्या चल रहा है? लाजियो, लेट मी जस्ट पुट इट. यार एक तो चैनल्स ना, ये सोनी 10, 1, 2, 3 बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं यार. चलो मिला, फाइनली मिला मुझे. आजा भाई. अरे चलो मैंने सब्सक्राइब ही नहीं किया सोनी 6 पे. कोई नहीं, वील प्रॉब्ली वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच देख ही रहे. आजा यार, क्या कर दिया मैंने? मैंने क्या कर दिया? आ रहा है, रुको. आ रहा है. मेरा ही पोपट हो गया तो. अरे आ गया. पता नहीं, कुछ तो दबा दिया था मैंने. कुछ हुआ नहीं ना उस समय, कुछ नहीं हुआ. मैन ये लेफ्ट बैक कौन है यार शेरिफ का? लेफ्ट बैक ही लेफ्ट विंग है. मैं देख रहा हूँ वापस से लाइन अप. पोजो, पोजो भाई. और ओटारा नहीं, ओटारा लेफ्ट विंग है भाई. अच्छा खेल रहा है. अगेन हम कुछ स्काउटिंग कर सकते हैं साथ साथ में. यार फेडे वैल्वेर्डे द चीट कोड ऑफ अ मिडफील्डर. अरे हाँ भाई है यार, मतलब ही कैन डू एवरीथिंग. ही हम बोलते थे ना टीमो वर्नर और टर्बो वर्नर, टर्बो टीमो. एक्चुअली टर्बो वैल्वेर्डे यार, आई एम टेलिंग यू, द गाय इज नेक्स्ट लेवल. और अगेन फॉर उरुग्वे विल बी लाइक इमेंस मैन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टॉक अबाउट उरुग्वेन्स, आई थिंक मतलब काफी उरुग्वेन्स है जो अच्छा कर रहे हैं आजकल मिडफील्ड में. तो आई थिंक उरुग्वे की मिडफील्ड बहुत अच्छा रहेगी वर्ल्ड कप में देखना. आई डोंट नो व्हाट यू गाइस, बट आई थिंक देख. और उरुग्वे के लिए शायद वो मिडफील्डर ही खेलते हैं या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो मिडफील्डर ही खेलते हैं वहां तो. काफी अच्छे मिडफील्डर है उरुग्वे से यार. ऑफ कोर्स स्ट्राइकर भी डार्विन नूनेज हाँ फॉर्म में नहीं है. लेकिन आई डोंट नो यार, व्हाट अबाउट यू? कौन सा प्लेयर चाहिए आपको यार? मतलब रीस जेम्स तो नहीं आने वाला वो तो टॉपिक खत्म हो गया. लेकिन स्ट्राइकर में अगर चाहे तो रियल मैड्रिड, हु कैन बी द बैकअप स्ट्राइकर फॉर रियल मैड्रिड? आई डोंट नो, लेट्स सी. यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम आराम से पासिंग गेम खेल रही है. आई थिंक थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को. आई कैन सी द अर्जेंसी फ्रॉम शेरिफ एज ऑफ नाउ. ओके, रोनाल्डो कमिंग बैक, टेकिंग द बॉल, बट आई थिंक शेरिफ प्लेयर डिस्पोजेसिंग हिम. और रोनाल्डो भाई, ही हैज फाउल्ड द प्लेयर. अगेन रोनाल्डो ड्रॉपिंग बैक इतना डीप, लुक्स लाइक वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. क्लियरली मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखा रही है. और आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के डालो आज थोड़ा फ्लैट लग रहे हैं और नेगेटिव लग रहे हैं. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ जो विंगर है अगेन ओटारा इज द गाय ऑफ शेरिफ, जो काफी अच्छा लग रहे हैं, बहुत शार्प लग रहे हैं फॉर मी. ओके, वन सजेशन इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन डू वॉच अलोंग विद यू शुड ऑफ चेल्सी आल्सो. हाँ यार, मतलब डेरेन, मतलब एकदम सच्चाई बोलूं, सच्चाई यही है कि यार एक तो बेसिकली देखिए चेल्सी का ऐसा है ना, मतलब हाउ टू पुट इट, मे बी यू माइट अंडरस्टैंड क्योंकि आप चेल्सी फैन हो. देखिए आई डू लाइक डूइंग वॉच अलोंग, ऐसे कुछ नहीं है. लेकिन वही गिवन अ चॉइस ना, मुझे एक जोन में होना ज्यादा पसंद है. अगेन यस्टरडे फॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शाउट आउट टू बाबा यार. आई वेंट टू बाबा वॉच अलोंग फॉर फर्स्ट हाफ, लेकिन देन आई वाज मिसिंग समथिंग आई थॉट. तो आई थॉट लेट मी एक्चुअली लिसन कमेंट्री, एक नो आई जस्ट रिएक्ट विद दैट एंड देन गो विद दैट. मतलब मुझे पर्सनली टू एट सम पॉइंट एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या होता है ना, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर में कंटेंट करते रहता हूँ. मतलब एट सम पॉइंट यू डोंट वांट टू लूज द लव फॉर द गेम. तो वो सब चीज होता है व्हेन यू एक्चुअली फील इट एंड एक्चुअली डू दैट विद हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स. वो थोड़ा सा आई फील दैट थोड़े दिनों के लिए बस लेट मी एक्चुअली feel that again and come back with that mojo back for Chelsea. That's one thing. Or of course, like if I need much more support with you all, with everyone being there,
ऑफ कोर्स धीरे धीरे आएगा, आई नो दैट, लेकिन आई ट्राई एंड डू यार अगेन. I don't want to kind of again do the same thing what say many channels जो तो यहाँ पर हम प्री मैच करते हैं, नेक्स्ट दिन वी डू अ लाइव रिव्यू बिकॉज वी बिलीव इन मोर इंटरेक्शंस. तो आई ट्राई एंड मतलब थोड़े दिनों के लिए थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ टेरेन, बट डेफिनेटली मे बी आफ्टर द ब्रेक आई विल गिव इट अ थॉट अगेन. No problem with that. How much you rate Germany in this World Cup? Germany, honestly मैं बोलूँ, I don't see them going very far as of now. Yes, things might change क्योंकि again Germany के लिए देखिए Muller is not that person who he was say 8 years back. Let's be honest. Same thing you can talk about maybe in the defense as well, in the midfield as well. But for me, the main problem is that Werner or Havertz are not that confident anymore what they were maybe a couple of years ago. इसीलिए मैं रेट नहीं कर रहा जर्मनी को. सिंपल एज दैट. हाँ अगेन वॉलेंड है, अदर प्लेयर्स है, बट कम ऑन मैन. अरे शेरिफ इज अ चांस, बट छक्का मार दिया है ऊपर. शेरिफ इज लुकिंग ब्राइटर. पीपल ऑफ कोर्स दे आर एट होम, दैट्स इंटरेस्टिंग. Hakimi for right back as he's already a Madridista, लेकिन वही उसको याद होगा. Real Madrid had a chance therein to buy him back. I don't think they opted that. I think buyback था, जहां तक मुझे याद है, from Dortmund was it? Yeah. And they didn't opt to do that. They sold it to Inter. Remember, सारी leagues था including Turkish. Oh my god. I want Gnabry. He can play as right wing. If Benzema injured, he can. सौरदीप गनाबरी मुझे लगा था जाने वाला है at one point this transfer window. Problem यही है ना कि भाई Gnabry is a kind of player who would expect to get a lot of starts. Do you see him starting? That's my question. मुझे नहीं लगता एंचेलोटी जब तक वो है एटलीस्ट एट वाल्वर्डे बेंच पर आएंगे. भाई वाल्वर्डे हैज टू स्टार्ट द काइंड ऑफ इंजन ही हैज, और वो बैलेंस देते हैं रियल मैड्रिड के. अगेन मैं यहाँ पे आई नो मैं कंपेयर करने वाला, आप लोग हंसोगे, लेकिन फॉर मी वन प्लेयर हु इज डिसरेस्पेक्टेड इन हिस्ट्री ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब इज विलियन. विलियन जो काम करते थे ना चेल्सी में, मतलब लोग अगेन सॉरी टू से, लेकिन काफी लोग फुटबॉल समझते नहीं. वो लोग समझते नहीं व्हाट विलियन गेव टू जोसे मोरिन्यो साइड, व्हाट विलियन गेव टू इवन अर्ली कॉन्टे साइड. जो बैलेंस देते थे विलियन विद हजार्ड बीइंग ऑन द अदर साइड, that is what Valverde kind of brings with Vinicius on the other side. So for me, Valverde is key for that Real Madrid setup, especially in big games. अरे almost एक chance हुआ रोनाल्डो के लिए, थ्रू बॉल था, लेकिन नाइस डिफेंसिव वर्क यार by शेरिफ. Finally, Ronaldo making that run, which is much needed. Back here, भैया. अरे back here. Thanks for that, यार Sayan. और again, do not forget to like. और भाई जो भी आ रहे हैं सब लोग बता दीजिए. अभी भी it's not too late to put in your predictions. It's Sheriff 0, Manchester 0. Definitely for me, Sheriff is looking much more livelier. लेकिन वही है, like we saw right now, एक चांस चाहिए for Ronaldo to kind of hit it in. So they almost did that, लेकिन नहीं, not really. Can stop the problem with Valverde and Rodrigo playing. Yeah, बिल्कुल वही है. Valverde को आप बेंच करोगे तो मतलब थोड़ा सा you know what, hit the rod when it's red, when it's hot. वो वाला चीज है. Valverde is in the purple patch यार. You don't want to bench him. Rodrigo as well, I would say. Choose one: Milan UCL winners or Dutch World Cup 2022 winners. Oh man, I think Dutch, man. Come on, कभी हुआ नहीं है ना, first time ever. Yeah, we have not won the World Cup for real, man. It pains me to say it, लेकिन I think probably one of the nations which really won, deserves to at least have one World Cup is Netherlands, yeah, in my opinion. आप लोग बोलिए, which is that one country? Obviously, you would want to say India. I'm pretty sure बहुत लोग chat में I'm pretty sure India से है. लेकिन अगर कोई country है, according to you, which is that country which has not won the World Cup and you would like them to see the win the World Cup? Again, just as a neutral, try and think and answer me. अरे बढ़िया ball to Ronaldo, or I think it's a penalty. I think it's a penalty. Pretty sure it was a clear push. रेफरी दिया नहीं है. Obviously यहाँ पे शेरिफ के जो डिफेंडर है वो चिल्लाएंगे रोनाल्डो पे कि भाई नाटक मत कर. आई थिंक इट्स अ क्लियर पुश इन माय ओपिनियन. एटलीस्ट लाइव में देख रहा था तो मुझे लगा था पेनल्टी. आप लोग बोलिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यस डच. वाओ that would be brilliant, bro. Thoughts on England squad? Again, मैंने डिटेल में देखा नहीं प्रियांश, लेकिन यार सैंचो नहीं है, टोनी है, आई अंडरस्टैंड, बट काफी इंटरेस्टिंग है. लेट मी पुल इट अप एज वेल. प्रियांश को बिग अप, इन बिहाइंड को भी शाउट आउट यार. ऑफसाइड भी था क्या? अरे कम ऑन मैन, श्योरली दैट्स अ पुश मैन, कम ऑन भाई. शोल्डर पुश नहीं था, इट वाज नॉट अ साइड बाय साइड पुश. वो क्लियरली फ्रॉम बिहाइंड मैन. आई नो it was not as strong a push, you can say that, lekin come on man, it was a push or momentum. Ronaldo did the experience guy jo karta. Again, I'm not a Ronaldo stan, I'm telling you,
ये पेनल्टी नहीं दिया, मैं सरप्राइज हूँ, सच में बोलता हूँ। आप लोग बोलिए। Poland, Lewandowski, yeah, but again, Poland as a team, yeah, they are very good on FIFA. People who watch my FIFA streams know that. लेकिन again, Portugal, yeah, Portugal, why not? मैंने तो बोला है भाई, Portugal maybe just things will finally click इस World Cup में, लेकिन again, that's more of an expectation of a hope. Okay, भैया not a penalty. पता नहीं यार, मुझे तो लगा यार पेनल्टी, मतलब मे बी आई एम कॉलिंग इट अ सॉफ्ट काइंड ऑफ अ चैलेंज. द ओनली रीजन आई एम सेइंग इज ना ही इज गोइंग फ्रॉम बिहाइंड, तो दैट इज द ओनली रीजन. मतलब साइड बाय साइड आई अंडरस्टैंड शोल्डर पुश, इट शुड बी फाइन, लेकिन हाँ, इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैलेंज, लेकिन चैलेंज वाज नेवरदलेस यार. इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी द बेनिफिट डाउट गोज टू द डिफेंडर और गोलकीपर. व्हाट अ प्ले यार, विंग प्ले बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन नहीं, आई थिंक सैंचो ने बढ़िया किया, लेकिन क्लियर्ड बाय शेरिफ डिफेंडर. बेंजेमा रिप्लेसमेंट, आई गेस रोड्रिगो अच्छा खेलता है स्ट्राइकर. अगेन लेट्स सी यार, इफ ही कैन bulk up a little bit. It's one thing playing, no disrespect यार, it's one thing playing against Leipzig, and another thing playing in the quarterfinals or semifinals of the Champions League against the top team. That's what I mean. I know Leipzig भी रही है, मतलब in the recent past, 2 साल पहले, लेकिन just saying it out there. Who are you supporting the World Cup? I am a Germany fan. Okay, I am a Netherlands fan, bro. This is the 2010 Netherlands alternate jersey. गोल होने वाला है, और yes, Manchester United score, man. And Sancho has looked brilliant in the last couple of minutes. और Sancho scores, बहुत ही बढ़िया composure. Manchester United has scored away to Sheriff. Talk about basically, talking about, not going with the momentum of the gameplay. क्योंकि pretty sure मुझे लग रहा था कि यार Sheriff had the better chances. अभी तक half chances, but whatever. Manchester United, man, what a ball. Let me see. Yeah, it's definitely a okay. It's an Eriksen ball to Sancho. Sancho took from his right foot to his left foot. और भाई अच्छा फिनिश किया. शेरिफ डिफेंडर्स भाई 2 लोग थे, कुछ नहीं कर पाए भाई. इज अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. कंग्रेचुलेशंस. लेकिन हाँ, इज दैट स्टार्ट इनफ फॉर यू टू से नहीं यार अब हो जाएगा बस, वी विल काइंड ऑफ rule this game, or do you see the worst coming? Because Sheriff has looked very bright again. If Liao joins City next year, then it's officially over for us. हाँ, ऑलरेडी फार्मर्स लीग है यार, प्रीमियर लीग तो मैं तो इस साल में मैं बोलता हूँ ऑलरेडी है. मेलवर्डेस ओरिजिनल पोजीशन इज जो क्रूज खेलता है लेफ्ट मिडफील्डर, बट वो पोजीशन छोड़ के हर जगह खिलाता है. उसको फिफ्थ मिडफील्डर, थर्ड विंगर एंड सेकंड राइट बैक. ओह माय गॉड, द गाय इज जीनियस मैन. फेवरेट सिंगर? ओह ओके, आई वाज अ मतलब huge Lucky Ali fan. Oh, by the way, just to share with you, Lucky Ali until middle school he has studied in my school as well. बहुत ज्यादा सुपर सीनियर है मेरे से, लेकिन Lucky Ali man, I was a huge Lucky Ali fan. मतलब मैं सूफी, मतलब फिल्मी सॉन्ग्स एंड इंडियन सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं जो सूफी स्टाइल के होते हैं ना. राहत फतेह अली खान, लकी अली, कैलाश खेर, दोज आर माय फेवरेट सिंगर यार. अरे व्हाट अ बॉल यार, डेविड डिया. सॉरी, मैं सोचा डेविड डिया नहीं, इट इज शेरिफ गोलकीपर. Sheriff goal. मैं सोचा for some reason I thought it's Malaysia taking the ball, but Sheriff goalkeeper man, what distribution, brilliant distribution that. आपका आपका कौन है यार सबसे फेवरेट? बोलिए. Darren and everyone in the chat, आप लोग भी बोलिए who's your favorite singer. लेकिन okay, Rafael Varane keeping the ball. It's imperative that Manchester United do not concede यार next 5 minutes में. I know Sheriff has looked very good. उनका जो स्टेडियम भी है ना, it's very close to the pitch. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक स्टैम्फोर्ड ब्रिज में होता है ना, इट्स वेरी, जो ओल्ड हाइबरी में होता था, ओल्ड आर्सेनल के स्टेडियम में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट यार. मतलब बहुत ही मतलब इट कैन रियली बी ऑन योर फेस, तो लुक्स लाइक इट्स अ गुड पोजीशन फॉर शेरिफ टू बी इनटू प्लेइंग इन द स्टेडियम. लेकिन हाँ, अगर आप देखते हो हिस्ट्री ना शेरिफ का, शेरिफ आर इन अ सिटी विच इज नॉट रियली बेसिकली एक recognized city नहीं है as far as I'm concerned, not very recognized city. So you have to give them all the credit that is possible यार. Again, थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है मुझे, I don't know, people hearing let me know. Atmosphere थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है despite इतना क्लोज है. तो I think it's clear that ऐसा नहीं है कि localites है, मतलब वो वाला फील नहीं है शेरिफ के साथ. It's a made up team, so that is clear with the what do you say, the atmosphere. हाँ, बट इन माय ओपिनियन, ओके अरिजीत है जरेन की, ओके नाइस. हाँ, अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छे लगते हैं यार. बट इन माय ओपिनियन एम्बापे या हालैंड के लिए
ही रुकेगी मैड्रिड टिल बेंजेमा का करंट कॉन्ट्रैक्ट एंड्स. फेयर इनफ. सो यू आर सेइंग कि रोड्रिगो और हजार्ड विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर. इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज मिस मेकिंग प्लेइंग 11 शेड्यूल. हाँ यार, करेंगे, बहुत दिन हो गया. डेफिनेटली करेंगे. अगेन थोड़ा सा चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल. बाय द वे सौरदीप और सब लोग यार, एंड ऑफ सितंबर मैंने ये भी प्लान किया था, और मैक्सिमम बाय अक्टूबर फर्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द वर्ल्ड कप सीरीज यार. फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हमें बात करना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात करना है, तो वर्ल्ड कप सीरीज हमें ट्राई करना है टू डू ऑन दिस चैनल. एंड ऑफ कोर्स वॉच अलोंग्स तो हम करते ही है. एटलीस्ट फॉर वन इनिंग्स विल ट्राई एंड डू इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, in India South Africa bhi. Do you think Haaland will leave because he has? I think he'll leave at some point. I don't see him ending his career at City. As much as I know that his dad has played there, he has basically been a Man City fan. He's told that many a times. For me, the age that he's come is a bit too young for him to stay there throughout. और वो हमेशा speculation होगी with Erling Haaland, the way that he's already started. हाँ, one thing you can say that if he stays in England, one motivation for him will be like Harry Kane, right? For example, अब हैरी केन इंग्लैंड में एक और एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, इज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड फुटबॉल टीम, ऑफ कोर्स बीइंग इंग्लिश. लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली हैरी केन वांट्स टू ब्रेक एलन शीरर्स रिकॉर्ड. सेम थिंग मे बी एज इन हालैंड वुड वांट टू डू. मे बी दैट्स व्हाट विल कीप हिम इन इंग्लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अरे अंकित एज वेल, गुड इवनिंग हियर एज वेल. कैसे हो भाई? आप लोगों का डिनर हो गया होपफुली. देन वेटिंग फॉर द डबल वर्ल्ड कप स्ट्रीम्स. या let's see we'll plan something interesting. Again, I would like to have more interactions. अरे बढ़िया गोल almost. Oh my god, I thought शेरिफ का गोल हो गया भाई. What a shot. लेफ्ट विंग से लिया. This left winger guy man. ओटारा, मैं अगेन बोल रहा हूँ. ओटारा भाई, who's this guy? He's putting in balls on the plate for the striker man. I am liking what Otara is bringing to the table. और यहाँ पर स्ट्राइकर क्या नाम है? एटीएम वेम बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, सॉरी मैंने बुचर कर दिया. लेकिन हाँ, एटीएम वेम बेसिकली अच्छा शॉट था, जस्ट वाइड. आई थिंक डाविडिया वुड हैव बीटन यार, अगर हो जाता प्रॉपर शॉट ऑन गोल. हु वाज योर फर्स्ट मेंबर एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? फर्स्ट मेंबर एज इन फर्स्ट चैनल का मेंबर ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. Not sure what is the question, yeah. You mean okay? Did you? नहीं, खाना अभी I had like a late evening kind of supper, so I've not had my dinner. Yeah, मेरा timing ऐसी होता है यार. It's not just me; it's most of the content creators. Trust me. I don't know whether others share it or not. Crazy work hours होते हैं, crazy kind of lifestyle होता है यार. Trust me on that. Again, we have Miraj in the house as well. या भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्रिकेट वाला T20 पूछ रहे हो? क्योंकि यहाँ ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर है. फुटबॉल वाला तो यार फेवरेट्स तो, अरे नाइस बॉल यार, ऑलमोस्ट रोनाल्डो के लिए ऑन द प्लेट था, लेकिन नहीं. आई थिंक फुटबॉल का, मैं चश्मा लगा दूं क्या थोड़ा? कोई नहीं, मुझे प्लेयर्स कौन है एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है. थोड़ा सा पावर है मेरा एग्जैक्टली. तो अच्छा, ब्रूनो ही था, ब्रूनो वापस से. फुटबॉल वर्ल्ड कप देखिए, अगेन आई कम टू प्रॉपर स्ट्रीम से हम बात करेंगे ये. देखिए, एज थिंग्स स्टैंड ना, आई डोंट थिंक आप जा सकते हो से अपार्ट फ्रॉम अ ब्राजील अर्जेंटीना ऑन फॉर्म. ब्राजील और अर्जेंटीना बहुत अच्छा कर रही है जनरली. और यूरोपियन टीम्स में ऑब्वियसली स्पेन हैज एन आउटसाइड चांस ऑलवेज. मे बी, आई डोंट नो, I'm still calling कि Portugal on their day can beat any team. I'm still calling that. So again, there are a lot of options. Again, मैंने early World Cup predictions किए थे, आप लोग चेक कर सकते हो. What were my predictions? Again, based on the gut, based on the form उस समय का, and of course the teams, the squads and all that, right? Maybe I don't know. Maybe just पता नहीं यार. Germany, I really doubt. France is an obvious choice from the holders. So I think these are फ्रांस, ब्राजील और अर्जेंटीना, पोर्चुगल, ये चारों मैं बोलता हूँ फेवरेट्स. क्रिकेट में तो भाई मैंने तो बोला है ऑस्ट्रेलिया are probably the favorites along with England. I think Real will bring attack after the World Cup in January. Okay. Hazard पर I have personally given up and most Madrid fans also have. Wow, interesting भाई. मतलब he's not done too badly after coming back ना. I know he's not looked मतलब that part what you expect. But लेकिन आप expect क्यों कर रहे हो अभी इतना? Keep your expectations low. I think we'll probably be happy in my opinion. नहीं? Miraj, nice to see you as always. YouTube member.
आप ही थे ना डेरेन? आप ही नहीं थे क्या यार? आई शुड हैव बीन रिमेम्बरिंग दिस। आप ही थे शायद, जहां तक मुझे याद है, नहीं? हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग है डेरेन। डेरेन मानव, सबसे पहले कौन था? डेरेन मानव, मिकाइल, पता नहीं यार, probably. I'm guessing. That is on Almighty Blues FC. Germany fan here for World Cup. Okay. Hansi Flick. Again, he doesn't have people in form here, in my opinion. Okay, Eriksen with a free kick. Or, oh, what a delivery, man. What a delivery. Goal kick है लेकिन. France is definitely one of the favorites. Problem with France is a lot depends on Griezmann. Griezmann आप देखिए. Again, death, taxes, and Griezmann coming at 60 minutes. That's a fact for Atletico Madrid, right? A problem ये है कि will Griezmann be match fit to play 90 minutes week in week out for that month and a half? वो मेरा only problem है. क्योंकि मुझे पता है कि Didier Deschamps he loves to play Griezmann, और the way that France play Griezmann is essential for them. That is my only question. Dutch or England? Well, I hope so. Again, Dutch team as a team they play very well. Problem is sudden से off हो जाते हैं यार, and the defense is a problem still. Yes, as much as you have a Delict, you have a Van Dijk and all that, still मुझे लग रहा है भाई Dutch defense on the day. I know full backs भी अच्छे आ गए अभी काफी, लेकिन अटैकिंग वाइज काफी अच्छे यार. बीट बेसिकली वाइंडाल, बीट बेसिकली डमफ्रीज. डिफेंसिवली थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है डमफ्रीज के साइड से. Your stream is more informative and less reactionary than majority of the mainstream content creator. I hope you know who I'm talking about. अरे doesn't matter यार. Again, much love to every content creator. क्योंकि मुझे मालूम है that content creation in general ना is not easy यार. Trust me. अभी मुझे भी कम से कम कितने 15 महीने हो गए putting both the channels put together. तो आप देखिए 15 महीने नहीं, ज्यादा ही हो गया, डेढ़ साल होने वाला है. तो डेफिनेटली फॉर मी इट्स नॉट इजी यार. अगेन, especially people who leave the secure jobs and kind of come learn, implement और फिर करते हैं so there's a lot of risk which goes into it, lot of time. आप देखिए when you again by the way एक फ्री किक है शेरिफ के लिए. आप मैच देखते हो इंडिया में, मैं तो हर एक फैन को रेस्पेक्ट करता हूँ, हु फॉलोज चैंपियंस लीग फुटबॉल, हु फॉलोज ला लीगा, हु फॉलोज लीगा. अरे वाह, व्हाट अ फ्री किक मैन, व्हाट अ फ्री किक बाय शेरिफ. दे डिजर्व टू स्कोर एट विद अ ब्रिलियंट, दैट्स अ प्लेयर नेम बाय द वे. अगर मैंने बुचर कर दिया वापस, ही इज द सेंटर फॉरवर्ड फॉर शेरिफ. व्हाट अ फ्री किक, लेकिन जस्ट वाइड. So I am talking about just about giving that time at very very odd hours. Not just as a fan job करते हो, I respect you all as well, but as a content creator, just imagine. First of all, इतना hectic रहता है schedule in terms of what it is. And again, we are trying to cover cricket and football, and even we tried to cover, for example, the Commonwealth Games. तो काफी सारा बेसिकली कवरेज होता है इन टर्म्स ऑफ द आवर्स, द जोन्स, द टाइम जोन्स. प्लस आपको साथ साथ में याद रखना पड़ता है बेसिकली whom you can call, whom you cannot. You have to basically keep track of the calendar, news. So it's not easy here. Again, even social media at the same time, for people like me who have not grown as such, really, social media is also kind of important. कि आपको बार-बार you have to spend time there also. So it's not really easy to balance everything, because you don't get it on a plate. You have to create. You have to be innovative. So every day you have to reinvent. So I respect every content creator. Trust me on that. Doesn't matter. Um, don't go for France. World Cup curse is real. Group stage में बाहर होगी. Let's see. Let's see. Do you support Barca? क्या एथलेटिको मैड्रिड के साथ? Is that what you're asking? Okay, suing Atletico Madrid. Okay, got it. Basically, yaar, the fact is, देखिए, if there's a contract in place, Atletico Madrid are in within the limits to use that clause. So I don't think it's a issue. Unethical you can call it, like in my opinion, it's not an issue. Again, the nitty gritty is मुझे नहीं मालूम. अरे what a touch यार, brilliant touch. लेकिन भाई it goes out for a throw in. Man, what a brilliant touch that was by Ronaldo and Anthony. Had a gameplay अभी बहुत ही अच्छा लगा मुझे. एंटनी का अच्छा लगा टच, लेकिन शो बोटिंग एज अ रिजल्ट, बिकॉज कुछ हुआ नहीं उससे. अरे आशीष, बिग अप यार, कैसे हो? ऑलवेज गुड टू सी यू अगेन. डू नॉट हिट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. डू हिट दैट लाइक बटन. एक तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है और मैच भी ठीक
ठाक चल रहा है। अरे कोई नहीं, आशीष हो जाएगा, ऑल द बेस्ट यार। बहुत डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, वर्ल्ड कप में जाके इट विल बी अ ह्यूज ब्लो टू एवरी क्लब इन दैट केस, टचवुड। लेट्स सी यार, मतलब अगेन इस सीजन स्पेशली मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप एंड द फैक्ट दैट फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग में 5 सब्स्टिट्यूशंस है, आई कैन सी लार्जर स्क्वाड्स बीइंग देयर, सो आई डोंट सी यू नो इतना बड़ा इशू। लेकिन अगेन इफ यू आर लूजिंग योर मेन प्लेयर्स देन तो इशू होगा किसी भी क्लब के लिए इन द वर्ल्ड, because whenever Chelsea concedes or loses, you don't abuse players. Oh, okay, okay. नहीं यार, काफी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं करते टू बी ऑनेस्ट, whoever is level headed. लेकिन हाँ, देखिए यार, मतलब it's very easy to be a fan of again, I'm not telling against any club, by the way, अच्छा play again by Sheriff on the wings. It's very easy to support a club or say a team or a player when things are very rosy. When things are not rosy ना, you got to be through thick and thin जो बोलते हैं ना, that is what real support is. मैं सच में उसमें बिलीव करता हूँ। अगेन मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ डेरिन, मेरे पास एक्चुअली क्लिप्स है हर एक मैच की। आई एम सीरियस, मैं इतना पागल था दैट मैं बैठकर बेसिकली रिकॉर्ड करता था, और मैं ना लिटरली हर एक मैच का पूरा पूरा मैच, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल मैचेस हियर। आप बिलीव नहीं करोगे, 2014 से लेकर 2017 एंड 2018 मेरे जो दूसरा लैपटॉप था, पुराना लैपटॉप, उसमें पूरा सा एवरी मैच वाज देयर, बिकॉज आई यूज्ड टू बेसिकली लव दैट फैक्ट, जब स्पेशली जब 2015 से 2016 के बीच में वी वर ट्राइंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो बहुत सालों तक नहीं हुए थे। आई रिमेंबर बर्ट्रेंड ट्रेवरे गेटिंग मिनट्स, आई रिमेंबर केनेडी गेटिंग मिनट्स, आई रिमेंबर लॉफ्टस ची गेटिंग हिज फर्स्ट मिनट्स during that season. So again, that was not a good time for Chelsea in 2015-16. For me, Mourinho, like I lived Mourinho proper, तो मुझे अच्छा लगा था। और ऑफकोर्स कॉन्टे ने एक इनिशियल जो दिया था ना, एक टच लाइन में जो पैशन दिखाते थे, तो आई वाज लाइक सो मूड। सो दो उन तीन चार सालों में आई वुड लाइक लिटरली हैव रिकॉर्डेड एंड केप्ट एवरीथिंग। That's how mad I was. Never knew you do cricket streams. I'll be there for every watch along cricket. अरे thanks यार. Again, we try and cover as much as possible, जितना possible है। हम प्रायोरिटी देते हैं फुटबॉल को, there's no two ways about it. झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, as a player though, I was better at playing cricket. Let me put it that way. And cricket was my first love. लेकिन हाँ, I give priority to football because of when you do watch alongs, when you do basically, as in just transfer stories or so, I think it gives you more just take excitement ज़्यादा compared to cricket. Nothing against cricket, but we do both. Who are favorite for UCL and La Liga according to you? भाई La Liga मैंने तो बोला है that despite Real Madrid looking like wow, I still say that Barca has to win La Liga. Come on, after doing that amount of transfers, यहाँ पे एक शायद फ्री किक मिल रहा है, रेफरी एंटनी को बुला रहे हैं, भाई आजा बात कर ले क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, बारसा फॉर मी हैज टू बी द फेवरेट्स मैन, क्योंकि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है। देखिए रियल मैड्रिड, इफ नो बेंजेमा दैट्स अ प्रॉब्लम, यस रोड्रिगो कैन डू, बट कैन यू डू फॉर 10 गेम्स ऑन ट्रॉट? हाँ, जस्ट वर्स्ट केस अगर होता है। लेवेंडोव्स्की अगर जाते हैं तो आई स्टिल फील दैट डिपाई इज अ लिटिल बिट अंडररेटेड देन व्हाट ही शुड बी। डिपाई लास्ट सीजन टेक्निकली हाईएस्ट गोल स्कोरर थे फॉर बार्सिलोना, रिमेंबर। तो आई फील दैट बार्सिलोना हैव अ लिटिल बिट मोर, प्लस फेरान टोरेस भी कर सकते हैं better job in my opinion as a striker compared to Rodrigo for a few matches. That's just my opinion. Jab form is not what the current form is. That is the only reason मैं बोलूँ Barcelona just about favorites. चैंपियंस लीग में लेकिन भाई रियल मैड्रिड ऑन अ डिफरेंट लेवल। मैं रियल मैड्रिड को अलग ही रेट करता हूँ चैंपियंस लीग में। रियल मैड्रिड हैड डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स चैंपियंस लीग, नो टू वेज अबाउट इट, रनिंग ऑन ऑटो मोड। रियल मैड्रिड, मैं तो बोल रहा हूँ बायर्न म्यूनिख, व्हाट अ बॉल, 100% गोल नहीं है, ब्रिलियंट बॉल यार, वे फ्री किक्स मैन, एरिक्सन इज टेकिंग फ्री किक्स फॉर यूनाइटेड आई बिलीव। भाई बहुत ही अच्छा सेट पीस लेते हैं यार एरिक्सन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओह व्हाट अ टेक, व्हाट अ टेक भाई, पीपल डिड यू सी दैट टेक? शरीफ का गोलकीपर डायरेक्टली फर्स्ट रूट फुटबॉल खेल रहे हैं टू सेंटर फॉरवर्ड, एंड व्हाट अ वर्ल्ड क्लास टेक लिया शरीफ का सेंटर फॉरवर्ड ने, एंड आई थिंक इट्स अ थ्रो इन टू शरीफ। वाओ मैन, दिस गेम इज लुकिंग मच बेटर देन व्हाट आई एंटिसिपेटेड। लेकिन यूसीएल में अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड Bayern Munich, I would also like to put by इस बार Man City and PSG. I think that they are definitely step by step वो improve कर रहे हैं in terms of knockouts in my opinion. शेरिफ को हल्के में मत लेना, हला बट अरे भाई, डू लाइक द स्ट्रीम, बिल्कुल आशीष थैंक्स।
अरे भाई मैं बोलता हूँ डेरिन इसका स्टोरी क्या है, मतलब मैंने देखा है भाई, ही वाज अ चेल्सी प्लेयर बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो डेरिन। तो भाई क्या था ना, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड चेल्सी प्लेयर्स एवर। ठीक है, ही गेव अ लॉट ऑफ हेट बैक, और चेल्सी हेटेड हिम इवन मोर। और एज अ पंडित वो खुन्नस निकालता है अपनी, और कुछ नहीं। हाँ, ही नोज अ लॉट अगेन, टुमारो हु नोज भाई, मतलब आई एम लकी इनफ टू अगेन मीट हिम लाइक अदर्स दैट आई मेट ऑन सोनी टीवी। लेकिन द फैक्ट इज क्रेग बर्ली फॉर मी, it's almost like a Glenn Hoddle wala cheese, you know. For whatever reason, he supports rest of England but not Chelsea as much. Glenn Hoddle, bhi, I thought he's a Chelsea ex-Chelsea manager, ex-Chelsea player, but फिर भी for whatever reason I don't see him supporting Chelsea. होता ना, मतलब soft bias भी नहीं देता यार थोड़ा सा, मतलब बाकी लोग को देता है, लेकिन that's the problem. तो आई थिंक वो खुन्नस निकालता है यार। चेल्सी फैंस booed him a lot of time during the end. No, he didn't have a great career with Chelsea, but he used to play for Chelsea. Decent था. Greg Bully, if I remember right, what he was a centre back. Let me just check it again if I'm wrong. I know that flank Lebouf was, and यहाँ पर एक और गोल हो गया. I think it's a goal. I think it's a goal of Manchester United. नहीं, is it a goal? No यार. Oh my God, a goal line clearance. शेरिफ के कैप्टन विद अ ब्रिलियंट गोल लाइन क्लियरेंस यार, सुपर्ब। वाओ, दिस शुड हैव बीन अ गोल। टेक्निकली मिडफील्डर थे, ओके चलो। नो नो, मैड्रिड ला लीगा, हाला मैड्रिड, हाँ मतलब मैड्रिड आर वन ऑफ द फेवरेट्स यार, ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ही क्लोज फाइट रहेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग बारसा अगर नहीं जीतती ना, इल बैकफायर यार, दे नीड सम मनी। हम लोग नहीं है फेवरेट ये साल, हम लोग का स्क्वाड डेप्थ इश्यू है बहुत, राइट विंगर स्ट्राइकर नहीं ऑफ। लेकिन वही ना, टूर्नामेंट फुटबॉल में यू डोंट नीड वीक इन वीक आउट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैंपियंस लीग में यू आर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स। लीग में यू नीड मोर कंसिस्टेंसी, एज मच एज ला लीगा इज नॉट एज डिफिकल्ट एज चैंपियंस लीग, जस्ट टू कंपेयर। लेकिन आई स्टिल फील दैट ला लीगा में यू विल बी ओके, रादर चैंपियंस लीग में यू विल बी ओके। अरे बिग अप कैसे हो यार, मतलब आई होप। पेनल्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। डोंट टेल मी इस बार दे देगा। ओ बुक कर रहा है भाई, एंटनी को लग रहा है। इज ही बुकिंग एंटनी व्हाट? ओ नहीं यार, ही इज गिवन, हैज ही गिवन अ पेनल्टी? कम ऑन, डालो थे। ओके, there was an impact, yeah, definitely there was a coming together. It was not as he tripped or something like that. भाई सैंचो का सेकंड गोल होना चाहिए था भाई, व्हाट अ गोल लाइन क्लियरेंस बाय दैट कैप्टन ऑफ शेरिफ। बट पीपल मैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड पेनल्टी, डिड यू सी दैट कमिंग? पता नहीं यार, मुझे तो लगा था तो जो रोनाल्डो पर था ना पहले वाला, वो ज्यादा पेनल्टी लग रही थी इससे। आप लोग बोलिए। आई फेल्ट दैट, अगेन मैं रिप्ले ढंग से देखा नहीं होगा, बट फॉर मी दैट इम्पैक्ट वाज देयर एंड दैट इट वाजंट अ क्लियर फाउल। हाँ यार, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ। रियल मैड्रिड यूसीएल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर्ल्ड कप सौरदी बोल रहे हैं रोनाल्डो टेकिंग अ पेनल्टी, पीपल गोल होगा कि नहीं बता दीजिए। इज इट अ गोल? आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली अ गोल। I think it's a goal. It's going to be Manchester United 2 away to Sheriff. But I have to say, thoda sa, it was not very evident for me. But again, maybe I'm watching a different match. Ronaldo down the center by Ronaldo. That is why he's a goat, man. Man, the guy has confidence. Beat Europa League or sue. Ronaldo has gone for it. People, come on. Again, congratulations for all the United fans watching or who will watch it. But for me, I have to say, overall, you deserve the penalty, considering the first one, in my opinion. I still believe that that wasn't a clear cut penalty. Again, आप लोग disagree कर सकते हो. Miraj, can you tell us how about how it was being on TV? I remember watching a YouTube video, but not sure what show that was. But anyway, how was the experience? Why it was different level, yeah. Matlab in terms of, I think more about being on TV. To be honest, because मैं TV पर पहले I have been there as a supporter. Basically, when I used to go for matches to Chinnaswamy, I've actually come on TV. But again, this is more a different case where I've been invited. Uh, it's a different thing altogether. Lekin most importantly, again, big up to whoever people were involved in that. Most importantly, it was the people that he was interacting with. John Dykes for me, again, जो लोग देखे होंगे maybe in the late 90s, mid 2000s, जो लोग देखे होंगे ESPN,
उस समय ESPN होती थी, इट यूज्ड टू नॉट बी स्टार स्पोर्ट्स 1 2 3 4, या इट वाज ESPN अलग और स्टार स्पोर्ट्स अलग। तो ESPN में आता था ये फुटबॉल फोकस जॉन डाइक्स, आप लोग देख सकते हो, और आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आल्सो माइट रिमेंबर दैट, लेकिन दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट शोज। एंड आप लोग बहुत लोग पूछते हो हाउ डिड यू लर्न अबाउट फुटबॉल एंड ऑल दैट, राइट? फॉर मी, along with watching football, along with playing football, focus John Dykes taught me a lot. ये आता था एवरी मंडे इवनिंग आता था, जहां तक मुझे याद है, उनका बीच बाद में वेंसडे शुरू हो गया था, तो एवरी मंडे या वेंसडे आते थे, एंड दे शुड डिस्कस वही हम जो करते हैं, दे शुड डिस्कस द वीकेंड फुटी, दे शुड डिस्कस द मिडवीक चैंपियंस लीग गेम्स कमिंग अप, और जस्ट जनरल न्यूज ट्रांसफर सब चीज डिस्कस करते थे। और शेबी सिंह, अगेन द लेट शेबी सिंह वाज देयर, ही इज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, उनको बहुत रेस्पेक्ट करता था मैं, ही यूज्ड टू बी देयर, देयर यूज्ड टू बी कपल ऑफ अदर्स, ऑफ कोर्स स्टीव मकमान, I remember Liverpool legend used to be there. Then of course, John Dykes used to host the show. So वहां पर great था। तो for me, just being with John Dykes is like वही है। It's almost like कैसे बोलते हो, मतलब he was for me the Harsha Bhogle of football. For me. So just imagine. Of course, Harsha Bhogle, he's my idol in terms of cricket, in terms of just hosting and just being there. But in terms of players, David James. Now, David James, yes, I wasn't a Portsmouth fan. I wasn't a City fan. I think David James City के लिए खेले थे, कहाँ खेले थे, Liverpool fan. लेकिन even being a Chelsea fan, I remember David James had great performances against us. Beat especially with Portsmouth. So वो मैंने बोला था first time. So that was a fantastic experience. Plus there was an ex-Chelsea player, Terry Phelan. I shared the stage with. So that was absolutely brilliant. Yeah, of course, Don Hutchinson. I'll never forget. Of course, it's just a beginning. Hopefully, I get more chances. But just sharing with you all. Ali Moreno, yeah, वो भी काफी मतलब बिंदास बोलते हैं. Again, he comes from North American football. If I'm not wrong, he comes from a lot of Mexican, Colombian kind of latte in terms of just his North American, South American football background. तो बहुत information आते हैं Ali Moreno, exactly. Yeah, मैंने देखा, crazy man. Support a club except Chelsea and UCL, who would it be? अरे AC Milan यार, and that's the irony. AC Milan आप देख रहे हो मेरे पीछे ना, काका है, तो काका, शेवचेंको, माल्डीनी, काफू, बड़ा फैन हूं। बाय द वे पीपल, भाई काफू ने कुछ गाली दिया है गैरी नेवेल को। अरे व्हाट अ बॉल मैन, व्हाट अ बॉल। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, दे आर प्लेइंग वेल, आई मस्ट से दे आर प्लेइंग वेल। 2-0 हो गया लेकिन दे आर स्टिल प्लेइंग वेल। लेट मी चेंज द स्कोर, बाय द वे मैं चेंज नहीं किया स्कोर फॉर व्हाटएवर रीजन। मैन, दिस इज लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली डूइंग मैडनेस आज। Again, Milan, I'm actually a Milan supporter as well. And मैं नहीं बोलूंगा I'm a stan or a fan. चेल्सी का तो पागलपंती है, लेकिन वही है, सीरिया मैंने काफी देखा है, especially my initial years. So वहां पर I had a एक inkling towards Milan. Why isn't Longley and Spence starting as what? Longley, anyway, he's coming on loan, so I didn't expect him to start lots. Once अगर टॉटनहम कंसीड करती और बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं होता, देन मे बी आई वुड हैव सेड ओके, नाइस ट्राई अगेन, थ्रू बॉल बहुत अच्छा दे रहे यार भाई, एरिक्सन एंड व्हाट डू यू से, ब्रूनो फर्नांडिस आर प्लेइंग रियली वेल इन माय ओपिनियन. ओके, रोनाल्डो थ्रू बॉल टू ब्रूनो, और ब्रूनो ट्राई किए नहीं यार, नहीं हुआ, कोई नहीं. अगेन मैं तो चाहता हूँ शेरिफ स्कोर करे, नथिंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, लेकिन मैं चाहता हूँ एज ए न्यूट्रल जस्ट अ गुड मैच. आई डोंट वांट देम टू लूज और एनीथिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई एम जस्ट सेइंग एक गुड मैच हो. एज बोथ डेविस एंड एमरसन आर पैथेटिक तो नहीं बोलूंगा, देखो दे आर काइंड ऑफ कीपिंग क्लीन शीट्स, दे आर काइंड ऑफ नॉट कंसीडिंग मच. एंड कॉन्टे आप जानते हो, लाइक एंचेलोटी डजंट लाइक चेंजिंग मच. कॉन्टे का वही काइंड ऑफ साइड वीक इन वीक आउट खेलते हैं. Tuchel was very different. Potter is very different. Conte, अरे गोल होना था यार. What a ball again यार, to the right wing. Why Sheriff are playing really well, I must say. I'm very impressed. When Sony first time invited you in panel with John Dykes, it's almost I couldn't believe. Like I almost checked with Manas as well. Is it for real? Like again, it happens a lot. Arey Darren, yeah, thanks a lot for the super chat. Means a lot. Again, Darren, काफी खर्चा कर रहे हो, लेकिन अगेन आई वुड ऑलवेज रिमेंबर योर सपोर्ट ब्रो. ऑलवेज बी देयर टिल द एंड, बट जब भी हम रहे, लेकिन हाँ, बिग शाउट आउट टू डरेन, नोज हिज स्टफ, चेल्सी फैन, लेकिन always supporting the channel. Again, it's the gesture which counts more for me.
युवा हर्षा बोगले लुक द सेम नॉट लाइंग. अरे भाई ज्यादा हो गया वो थोड़ा. देखते हैं. हर्षा बोगले मैन अलग ही लेवल. एंड फॉर पीपल नो स्टोरी यार, मतलब बाय द वे हाफ टाइम हो गया है पीपल. इट्स मैनचेस्टर टू अवे टू शेरिफ. क्या लगता है शेरिफ डिड दे नॉट डिजर्व एक गोल? कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट. रोनाल्डो पहला जो पेनल्टी चैलेंज था, आई थॉट वो भी पेनल्टी था. सेकंड वाला हाँ, क्योंकि पेनल्टी दिया, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वीआर डिड नॉट ओवरटर्न इट. लेकिन इन माय ओपिनियन द फर्स्ट वन वाज मोर ऑफ अ पेनल्टी देन द सेकंड टाइम. लेकिन जो भी है पेनल्टी तो दे डिजर्व्ड इट. तो यू हैव टू गिव इट ऑफ. सैंचो हैज हैड अ क्रेजी नाइट. यू कैन से एरिक्सन क्रेजी क्रेजी फ्री किक्स. भाई बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं एरिक्सन. एंड ब्रूनो फर्नांडिस और रोनाल्डो का के बीच में थोड़ा सा केमिस्ट्री और बढ़ते हुए एज ऑलवेज दैट obviously they have already. लेकिन अभी के लिए they're looking like okay, they are really looking like okay, they're gelling. लेकिन first 20-25 minutes it was all Sheriff in my opinion. फर्स्ट 20 मिनट्स स्पेशली, क्योंकि शेरिफ के जो लेफ्ट विंगर थे ओटारा बहुत अच्छा किए. आप लोग बोलिए लाइक हु इज दैट प्लेयर यू आर मोस्ट इंप्रेस्ड विद? इफ आई हैव टू से वन प्लेयर इन द मैच व्हिच काइंड ऑफ स्टूड आउट, एंड अगेन आई विल गो ओवरबोर्ड एंड से दैट फॉर मी ओटारा रियली स्टूड आउट. अगेन यू माइट डिसएग्री, लेकिन लेफ्ट विंग से जो बॉल्स आ रहे थे टू द राइट विंगर एंड अ स्ट्राइकर वाज मेन. ऑफ कोर्स उनके स्ट्राइकर भी अच्छे काइंड ऑफ फ्री किक्स लिया उन्होंने. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव इट टू सैंचो एंड एरिक्सन यार. अभी के लिए नहीं. मैंने कल देखी नहीं चेल्सी का गेम. क्या था आपका फर्स्ट ओपिनियन अबाउट ग्रैम पॉटर? अरे यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यार आस्किंग क्वेश्चन. देखिए आई हैव एक्चुअली कवर्ड अराउंड 25 to 30 मिनट्स में बात किया हूँ. आज एक स्ट्रीम की थी हमने ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में. आपने शायद मिस किया है. इधर बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी मेन चैनल एज वेल. इट्स ऑलवेज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो वहां पर मैंने यही बोला है. देखिए देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स अबाउट अस गेटिंग दोस क्विक पासेस. एक फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लग रही थी ऑन द पिच, एक फ्लूइड एलिमेंट ज्यादा था. लेकिन प्रॉब्लम्स सेम थे. प्रॉब्लम्स क्या थे कि भाई नॉट इनफ शॉट्स. हैवर्ट्स नॉट एबल टू कीप द बॉल. हैवर्ट्स लूजिंग पोजीशन. सब्स्टिट्यूट्स नॉट इनफ इम्पैक्ट. ठीक है, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट सच में बोलो तो. एंड ऑफ कोर्स वर्टिकल पासिंग नहीं, इट वाज मोर अबाउट अ विंग्स डूइंग द वर्क ज्यादा. तो काइंड ऑफ सेम था. और या पहले हाफ में हमने डिफेंड अच्छा किया कंपेयर टू रीसेंट टाइम्स. लेकिन सेकंड हाफ में आफ्टर स्कोरिंग आई डोंट नो व्हाट एवर हैपेंड टू अस लाइक रीसेंट टाइम्स. यार दो चांसेस हुए और सॉल्जबर्ग ने स्कोर कर दिया एक से. दैट्स द प्रॉब्लम. Easy win for United. CFC Blues बोल रहे हैं. It looks like it. Welcome to the stream, CFC Blues. Again, not forget to hit that like button. Always helps. Like I always say, do not forget to reach that target of subscriptions and likes, people. Let's get there. Best commentator according to you. भाई अगेन मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ. आई डोंट नो बट चलो क्रिकेट का बोलते हैं भाई. क्रिकेट का तो मैं बोलता हूँ. आई रियली लाइक टोनी ग्रेग. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड टोनी ग्रेग लाइव मैन. मतलब शारजा का जस्ट गेट द रील्स मैन. शारजा जो हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो सीरीज वेयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैड दैट क्रेजी सचिन वाला, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एवर. Tony Gray was there. Wow, what commentary यार. मतलब I also liked Jeffrey Boycott at the time. लेकिन Tony Gray even earlier मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मैंने 92 World Cup was my first World Cup that I actually watched as a literally baby था, but still I did watch it. And I did remember watching a lot of clips later because I played cricket 97 a lot. Richie Beno. I don't know if you guys have played cricket 97. Richie Beno is also one of my favorite. But I think David Lloyd has to be for me overall best for me. That's my call. Football mein, I think I don't know. It's got to be Peter Drury probably. Again, I don't have many choices. Peter Drury probably is the person for me. Actually, Don Hutchinson is not too bad, but Peter Drury is next level. Yeah. Who you support in ISL? Bhai, it has to be Bengaluru, man. Bengaluru. It's got to be Bengaluru. Again, हम try करेंगे यार जितना time permits to cover that. But again, मुश्किल होता है. Like I said, तो content creator का people judge very quickly. लेकिन it's not possible to cover a lot of things at some time. So let's see. I'll try my best. We did cover last time as well important matches. So hopefully we'll do that. Do you miss Peter Drury? Yeah. But again, अभी तो यार as a content creator, I very few matches होते हैं जहाँ पर मैं commentary के साथ सुनता हूँ. So I kind of miss that. इसलिए Darren was asking, why you're not doing Chelsea watch-alongs? That's one of the reasons as well. You can say that for the time being. But we'll come back to it as well. Sheriff की हिस्ट्री देखना. पापा पेरेस छोटी बच्ची. Oh my God, Tushar, nice one. Oh, अच्छा, congratulations यार. Thanks a lot. Again,
I hope it's worth it. And then much love to you. If I could compare content creators to football manager on basis of behavior, Ankit Bears, Ancelotti. Oh man, that is like, oh my god, you have no idea here मैं कितना respect करता हूँ Ancelotti. I think he has been a subscriber to the channel for a long time and knows that I respect Ancelotti like anything. And even मेरे tactics होते हैं when it comes to playing FIFA, it's very Ancelotti like. So I love the fact that you have actually said that. It's a huge moment of pride for me that you said that. I watched Have Hope Football Hub and उसने कहा players ही problem है for Chelsea. Yeah, HH. I do watch him as well at some point. Big up to him. भाई देखिए, Chelsea में players has been a problem for a good while. For a good while. मैं तो बोलता हूँ even when Hazard was in Chelsea, even in those days Chelsea में player power has been a problem. We don't have that week in week out वाला mentality. और best example मैं बोलूँ क्या है, 2015 में Mourinho got the best out of the Chelsea squad. We won the league. 2016 में हमने क्या किया, हगा, proper हगा. We had almost the same players, but still we did terrible. And that is what clearly shows that. And we had Gus Hiddink also coming after Mourinho was sacked, so still we did so bad. So I think it's clear that players are a problem in Chelsea for a long time, and that's going to stay for a long time. लेकिन we need a manager जो players respect, or who can be tactically, as in very good, to kind of make them understand why it's important to kind of have that week in week out. Are you referring to Sandstorm? हाँ यार, what मतलब वो एक मतलब लाइव देखा था मैंने यार. आई डोंट नो इफ यू वॉच इट लाइव. अलग ही मतलब फील आई थी यार वो मैच देखकर. अलग ही फील है, मतलब बैक टू बैक वो भी मारा था यार, बैक टू बैक. आई रिमेंबर वी हैड टू क्वालिफाई और भी डिफिकल्ट था. नयन मोंगिया एंड सचिन वर देयर एट द क्रीज. वाओ मैन, ब्रिलियंट. Akash Chopra is the best commentator. Akash Chopra is actually better than many people think he is. यार, I believe he's quite good in my opinion. हाँ, रवि शास्त्री यार, मैं भूल गया यार अपना इंडियन. I have to say रवि शास्त्री यार, मतलब I like रवि शास्त्री, simply put. Gautam Gambhir teaching how ball swings on commentary. Oh wow. Ankit, 2012 UCL final, Martin Tyler commentary. Actually, you know what? Thanks for reminding me. Martin Tyler, man. Martin Tyler over Peter Drury. Yes, I agree with you. Martin Tyler over Peter Drury for me. Again, मैं तो old school हूँ थोड़ा. Oh wow, really? मिस कर दिया यार मैंने. Oh no, मैंने देखना है यार ये 100% वायरल हुई है. मैं देखूंगा ये. Definitely देखेंगे. I wasn't born. मुझे I guessed it. मिराज कोई नहीं. Imagine 2004 Jose against Ziyech and Pulisic. Oh my god. यार जोसे ना केविन डे ब्रुयना को खिलाया नहीं. Imagine what he had done with Christian Pulisic and Ziyech, यार, with the attitude they are showing. Again, let's hope कि Potter has that एक होता है ना, एक just एक character to kind of get the best out of them. अब let's see, time will tell. अब different है. देखिए 2004 वाला मैनेजमेंट आज के दिन में नहीं चलेगा. आज के दिन में सोशल मीडिया है, प्लेयर्स आर मच मोर एक्सपोज्ड, सो यू कैन नॉट रियली डू दैट स्कूल ट्रीटमेंट. इसलिए मे बी कॉन्टे का सेकंड सीजन पीपल डिडंट रिस्पेक्ट हिम एज मच. Costa being an example. Of course, he didn't respect Costa. Willian, for example. Tuchel, of course, you can say Lukaku. Lukaku is the problem, 100%. लेकिन even Tuchel to some extent. Micro management नहीं चलती है आज के दिन में. That is the reality. और मैं बोल रहा हूँ generally in life ना, like again more recently for last few years I have been a manager myself. तो मुझे पता है भाई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं चलती है कोई भी फील्ड में आज के दिन में. यू कैन नॉट स्कूल एनीवन. ओके, अब तो रोनाल्डो ने भी गोल कर दिया, लगता है मेरा रिजल्ट आने वाला है. चलो, ऑल द बेस्ट अगेन आशीष. I don't like Manjrekar, but I like his voice for English commentary. Okay, Manjrekar again. यार मैं I used to be a Manjrekar fan as a cricket. मतलब when he played cricket, will you believe that? मतलब the fact that he was mid 90s में Manjrekar was our Rahul Dravid. Let's put it that way. 1993 से 1995 तक he was actually a Rahul Dravid, and that's for real. So I used to actually like that fact. हाँ, Ravi Shastri also used to try and do that, लेकिन I used to not like Ravi Shastri because he used to start very very slowly. So I should not like Ravi Shastri as a cricketer. लेकिन Manjrekar, I don't like him as a commentator. I have to be honest, Jaren. Big up to him. Obviously, he knows his stuff. लेकिन यार, again, someday I meet him. I'll obviously have to admit that he knows much more than me and he's much better commentator than me.
100%, लेकिन वही है कंपेयर टू अदर्स आई एम सेइंग। जोजे बेन श्वाइनस्टाइगर दिन थी। वेल यू नो व्हाट, जोजे ने बहुत लोगों को किया था यार, बहुत लोगों को किया है, मतलब ऑफ ऑफ मतलब मुझे याद है देयर वाज अ मैच, कल मैं बाबा से डिस्कस कर रहा था ना, दैट एक आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मैच, वाज इट अगेंस्ट एस्टन विला, आई डोंट नो। चेल्सी का 2005 में आई थिंक अराउंड 18 मिनट्स हुए थे, 18 मिनट्स ही मेड टू टू चेंजेस, उस समय खाली 3 सबs होते थे, he made two changes in the first half, the middle of the first half, he made two changes, imagine, that was tactical, that is what Jose does। अगर वो दिख रहा है ना प्लेयर नहीं दे रहा अपना 100% based on his tactics, take him off। again that was Jose part 1, Jose part 2 is very different, huh? अरे मच लव ब्रो, कैसे हो? फर्स्ट हाफ यार देखिए, मतलब अगेन कमिंग बैक टू दिस, लेट मी एक्चुअली शेयर द स्क्रीन विद यू सो दैट आप लोग भी रिलेट कर पाओ, और अगेन आप लोग बोलिए यार, मतलब आई नो इट्स काइंड ऑफ वन साइडेड यू वुड से, लेकिन आई थिंक जो लोग हर एक मिनट नहीं देखिए probably they'll think that way, because in my opinion it wasn't as one sided as what it seems like। yes, Manchester United की midfield have been owning the game, no two ways about it, especially Eriksen और Sancho are doing very well on the left hand side, ठीक है, लेकिन in my opinion this guy Otara ये underrated है, he has done very well along with ATM। प्रॉब्लम ये इनकी रेटिंग कम क्यों है, क्योंकि इनकी फिनिशिंग बहुत ही खराब है, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। आई थिंक दे मेड सम गुड फ्यू हाफ चांसेस, लेकिन देयर गोलकीपर आल्सो बहुत सरप्राइज जो ऐसा रेटिंग है गोलकीपर का। आई कैन अंडरस्टैंड दिस गाय कंसीडरिंग अ पेनल्टी, पोजो लेफ्ट बैक एंड नॉट गेटिंग गुड रेटिंग, लेकिन गोलकीपर बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने, आई डोंट नो, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्रिलियंट। So it's just that they are not having that cutting edge versus Manchester United, who towards the end of the first half started getting more confidence. Or talk about deliveries, Eriksen, what brilliant deliveries of free kicks especially। ओके, डिड यू सी डीके ट्रिब्यूट टू आरसीबी? हाँ यार, मैंने स्टोरी भी डाला है अपना, मैंने वही डाला, बट डीके टू बी वेरी ऑनेस्ट, again personally I can share with you, like on a personal front I have been through a lot in my life, again not that others haven't, but I've been through a lot, and I mean a lot। So DK is on a personal front, you know, a very 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 big inspiration for me, there's no two ways about it, a very big inspiration, one of the most inspiring guys that is that exists in you know, sport for me। इतना मैं दूंगा डीके को ट्रिब्यूट, आई थिंक दैट्स यू नो, दैट्स व्हाट आई वुड से। अगेन बहुत कम होता है दैट पीपल मेक सच कमबैक्स। अगेन मैंने कुलदीप पाजी के लिए बोला, भाई कुलदीप भाई, मतलब बिग अप, आप अगर देखोगे तो प्लीज देख लेना यार, मतलब आई जेन्युइनली, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द व्यूज और समथिंग लाइक दैट, जेन्युइनली आई बिलीव इट, लाइक जो लोग कमबैक करते हैं ना, एंड पीपल irrespective of age, irrespective of you know setbacks in life, they come back, they make a comeback, and you know it's very easy to say, वो लगता है ना, बहुत फिल्मी लगता है कि भाई देख they make comebacks, come on यार, ये easy है, they have a lot of you know better kind of एक है environment for them to come back, they are all having all, मतलब पैसे उनके पास हो जाएंगे, लेकिन it's not easy यार, it's not easy, trust me, क्योंकि at the end of the day भाई, even the superstars भी at the end of the day वो भी human being है, so even when they are basically thinking by themselves, at the end of the day people that they can 100% trust are probably only their family or the best friends, जो होता है very very few people, and with them they are quite normal, and they actually know what they are going through in life otherwise, apart from जो आप लोग को दिखता है on screen। So for me, people like DK, people like Kuldeep Paji, you know, people who just make comebacks great। मतलब talk about comebacks, I know story बोल देता हूँ भाई, 1993 वर्ल्ड कप में people must have read it by now, I'm pretty sure आप लोग ने देखा भी होगा डॉक्यूमेंट्री बहुत, मोहिंदर अमरनाथ was a man of comebacks, you know, and such people inspire generations, सच में बोलता हूँ, and that's why they are respected for me। Who was the manager who played Fellaini at striker and he scored a hat trick? Oh, Mantesh Singh, welcome to the stream by the way, like कर दीजिए, I hope you have subscribed to both our channels by the way। You know what, I think David Moyes, the way he used Fellaini, wow, you have to give him all the credit यार। At Everton he was next level, लेकिन Jose Mourinho used to use Fellaini as a John Obi Mikel, but he used to also use him as a striker, I remember that बिल्कुल। Yeah, but again, मतलब Ancelotti was one of the most unlucky Chelsea managers, इतना भी बोल सकता हूँ है यार। अंकित भैया, मैं चेल्सी फैन 2014 में बना when I was 13, but regularly 2020-21 सीजन से मैचेस देख रहा हूँ। I don't know रूडिगर कैसा प्लेयर था उससे पहले, can you please tell how was he? You know what?
Rudiger, when he was actually signed, and मतलब under, I remember under Sari, वो injured थे, और again he was, Casemiro looks like coming on people by the way. हाँ 2-0 है तो kind of I expected. तो रूडिगर, इवन रोमा से हमने साइन किया था. He came after an ACL. I remember that. So there were a lot of question marks. Why are we signing someone who's had an ACL injury in the past, if I remember right? Lekin again he played well in the back four. Again he got injured. And then talking about comebacks, why he's also one of them. Lampard froze him out because Lampard thought that, come on, he's not having that element. Yes, maybe reason tha Kepa, lekin Lampard wasn't comfortable with them two playing together. So Lampard froze him out. Or फिर towards the end of Lampard's era, he started getting matches because Lampard concede करने लगे थे बहुत ज़्यादा. Not that he wasn't already. And then probably, under Tuchel, what he did was a different level. So for me, he was already a very good defender. He got a lot of character on the pitch. जब भी under Sarri he played. But even before even Roma days, mein, by the way, he played right back at times in Roma, I have to say. He was mainly a centre back always, and he played in the back four. Like in Germany, ke liye he was playing in the back three a lot of times. So I would consider him as a very good defender at that point. But he went from very good to wow. Character तो हमेशा था under Tuchel. Best commentator Gary Neville, just kidding. Oh my god. Especially जो Torres वाला गोल है भाई वैशाख. Torres against Barca. No disrespect to Barca fans. That has to be a moment for a Chelsea fan. Especially me who backed Torres like anything यार. Torres भी मैं respect करता हूँ यार. मतलब कितना उसको hate मिला था यार. I remember. Those who hate Milan, okay, Willian should know 15-16. Without him, we would have come 15 that season. Yeah, Willian, man, अलग ही level थे यार. I'm telling you, Willian was. I have no qualms of saying that यार. Between 2014 and 2018, Willian was my favorite player. मैं सच में बोलता हूँ. In FIFA, मैं अपने आप को बनाया था as Willian. I used to play as Willian all the time. I loved his energy. Again, I like a team man यार. मतलब वो as a fan, I like मतलब skills you always love. लेकिन टीम मैन मतलब और भी आप चाहते हो. तन्मय भट्ट, हाँ तन्मय भट्ट यार, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिग अप यार उनको भी एब्सोल्युटली. एंड व्हाट ही इज रूलिंग इट यार, डेफिनेटली. फॉर मी इट्स विराट बिकॉज हेट ही गॉट एंड गेट्स स्टिल ही डिजर्व्स अ मास्टर क्लास. हाँ मतलब देरेन ये भी बाय द वे सेकंड हाफ स्टार्टेड. बट यार देखिए विराट का ऐसा है ना, मतलब एक बताऊंगा, इन हिज अर्ली आरसीबी डेज आई नेवर लाइक्ड हिम यार. वो अलग ही विराट थे. बट अगेन 2011 वर्ल्ड कप से he had become a different Virat. I don't know what, maybe because of his dad, I don't know what, but he had changed, man. So I started respecting him even more. But हाँ, अभी तो obviously most of us are fans. अरे what a ball यार, Sheriff should have scored there. Come on, left side देना था Diop के, लेकिन right side दे दिया, कोई नहीं. After Muller scored, did you think we would win it? I didn't think we would win it. I'll be very honest. I didn't think we would win it. लेकिन मुझे लग रहा था कि यार अभी भी चांस है कमबैक का. लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि बायर्न माइट स्कोर एज वेल अगेन, क्योंकि वो जो कुछ मोमेंट्स के लिए ना एवरीथिंग वाज हेवायर. और मुझे लग रहा था यार इट माइट बी वन ऑफ दोस, जैसे रिसेंटली हुआ था ना बिटवीन पोर्टो एंड एथलेटिको मैड्रिड. आई वाज एक्सपेक्टिंग सच अ फिनिश. लेकिन लकीली मैन इट वाज जस्ट वन गोल. एंड यस, पेटर चेक सेविंग अ पेनल्टी. आई नो, आयरॉनिकली आयरन रॉबिन, my favorite player of all time. Ancelotti is making him right centre back. Yeah, I think he's probably in a back four suited like right centre back more. Like in a back three, if he's more suited at left centre back. United currently chilling in Afghanistan. क्या हुआ यार? Oh my god, sorry यार, sorry to hear that. And I am happy because for some reason, again, people who are new to this channel, please do not forget to subscribe. और 100% गोल होने था, लेकिन नहीं यार, goalkeeper saved it. It was almost training ground. What was that? I think free kick दे दिया है referee ने. It was Bruno shot coming from the right hand side. दालो का क्रॉस था शायद. अच्छा, कैसिमिरो conceding a free kick. अच्छा यार, मिलिटाओ तो काफी अच्छा कर रहे थे यार, मतलब लास्ट दो सीजन्स में. अगेन, आई डोंट वॉच एवरी मिनट ऑफ रियल मैड्रिड, बट आई वॉच एवरी बिग गेम ऑफ रियल मैड्रिड. तो मुझे लगता है मिलिटाओ थोड़ा सा अनफेयर है यार. मतलब नहीं, लास्ट सीजन आप देखिए, इफ आई रिमेंबर राइट, फॉर आई थिंक वाज इट दे नीडेड अ विन अगेंस्ट वाज इट इंटर मिलान, और मिलिटाओ ने ही फोर्स किया था फॉर टू बरेया टू गेट अ रेड कार्ड. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड मतलब देयर इज एन एलिमेंट टू मिलिटाओ भी यार, थोड़ा मतलब कैरेक्टर है वो भी.
Our footballing ability is not too bad. For Ziyech, we lost. I would not say that directly. I would not say that directly, Darren. मतलब again, आप अगर जियेश के को देखो ना इन Ajax days again, maybe आप बोलोगे because Dutch football generally have a sort of bias. लेकिन जियेश for Ajax was different level यार. He was crazy good. तो for me, I thought Ziyech was a bargain सच में at that point. लेकिन अगेन इंजरीज आप बोलिए सुपर कप पीपल फॉरगेट भाई सुपर कप लास्ट सीजन बहुत अच्छे से जियेश यार तो डोंट फॉरगेट देयर हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स टॉटनम वी बैंटर टॉटनम इस सीजन में लास्ट सीजन हमने कितने बार जीता था टॉटनम के साथ ही वाज गुड इन ऑलमोस्ट ईच टॉटनम गेम देन अगेन मैं यहाँ पे आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ आई एम जस्ट सेइंग दैट इज नॉट एज बैड एज व्हाट लुक्स लाइक हाँ ही probably not anywhere close to what we wanted that is also a fact then Man City in the year that we won the Champions League, Atletico Madrid, he was very good. There were a lot of times where Ziyech has been good. Yeah, it's just that he's not been consistent or anywhere close to it. Casemiro doing the Kida. Wanted to win watching 8 hours penalty shootout is not a joke nowadays. Can't even see 2 hours. Yeah, that was a crazy one. Yeah, 2012 was a crazy one. Arey, big up to 8744. How are you, bro? Arpan, long time no see. And yes, Barca, unfortunately, to have lost that game, but I know there was a penalty. Arguably, was still Bayern deserved it. Any comments there, Arpan? But again, people do check out 8744 as well, in case you haven't. Milita has been shaky. Yeah, he's been shaky, but I would still not tell him that he's liable or as in liability nahi hai. So I think he's still a very good defender. Okay, यहाँ पर talking about defense, I think Sheriff just about defended the ball. Bruno Fernandes को मिल सकता था chance, बढ़िया. लेकिन let me see. I really need a goal यार यहाँ पे for the game to be much more interesting. A goal should come. Yeah, that was a penalty. I'm just disappointed Barca didn't score. That Martinelli commentated that night was the best for me. Yeah, Davis. देखिए यार मतलब एक चीज है मैं बोलना चाहूंगा देखिए डेविस का एक गेम है व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आप लोग बोलिए ही रिलाइज अ लॉट ऑन हिज पेस ही रिलाइज अ लॉट एक होता है ना कमबैक जो करते हैं रिकवरी तो दैट इज वन थिंग ऑफ डेविस दैट आई सेड आई वुडंट से पॉकेटेड मैं तब बोलूंगा व्हेन समवन बेसिकली रीड्स द गेम एंड बेसिकली knows exactly and not even give a chance or a sniff to the person इसीलिए मैं बोल रहा था जब मैं आज स्ट्रीम कर रहा था अलोंसो एक्चुअली हैड अ वेरी गुड गेम मार्कोस अलोंसो क्योंकि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अलोंसो वन बिट और he was actually overperforming himself and it was more like he is not one who depends on his pace much yeah मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ Alonso is better than Davis obviously had the better game लेकिन फिर भी I would say that pocketed I will not use the word pocketed लेकिन anyway Ziyech abhi average player yeah I agree he's become below average I would say right now मतलब based on the last year entire year performance last 12 months I would say below average है यार by any standards come on especially for a club like Chelsea way below standards he has to एक होता है ना with Chelsea you have to be ready यार even if you get few chances you have to be ready that's the challenge इसलिए you pay the big bucks but losing Rafinha hurts more yeah that I agree again, yeah, you can say that we didn't lose Lewandowski, we didn't bid for Lewandowski, but clearly there was an interest in Lewandowski. यार interest तो definitely था. वो बेचारा he was only going for Barca. बेचारा क्यों बोल रहा हूँ हम बेचारे लेकिन I feel that देखिए Aubameyang is good, but come on यार मतलब it's almost saying that यार Barca were okay with Aubameyang with the second choice and हम लोग के लिए first choice है. समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ come on, man. I think we probably wanted a better striker as much as Aubameyang is good. And, honestly, मैं बोलता हूँ मतलब I regret not getting a good striker. Simply put, मैं hope कर रहा था that we'll get a top striker. Who's your favorite cricketer? Okay, all time Sachin sir. Yeah, Sachin sir is God to me. Definitely. And generally, oh what a ball, man! Brilliant ball. लेकिन नहीं too long. Why United have playing proper ball आज Dalo with a run if I'm not wrong Malaysia with a ball लेकिन ABD I think for RCB it has to be ABD for me
विराट और गेल काफी क्लोज आते हैं. एबीडी हैज टू बी फॉर आरसीबी. एंड जनरली इन टी20 क्रिकेट भी एबीडी है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में कौन है मेरे फेवरेट प्लेयर? मॉडर्न डे क्रिकेट में विराट कोहली बोलूंगा. विराट कोहली प्रोबेबली. हाँ, आई वाज माई सेल्फ अ बॉलिंग ऑलराउंडर इज व्हाट आई वुड से. तो आई काइंड ऑफ ऑब्वियसली मतलब आई वर्शिप्ड अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल. लेकिन अगेन फेवरेट क्रिकेटर ओवरऑल आई हैव टू से between these three that I said. Okay, running a football club, John Terry, after enrolling on a FIFA diploma course for club executives. Interesting. Why John Terry recently wasn't he a coach? Wasn't he a junior coach at Chelsea as well? देखते हैं. तो सबसे सबसे रिसेंटली क्या किया उन्होंने? देखते हैं. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. या कोचिंग कंसल्टेंसी कर रहे हैं ना, अभी अभी भी वही कर रहे हैं नहीं क्या? फॉर चेल्सी. Davis after his heart problem hasn't been same, but I think this game he was really good यार. CFC Blues. Imagine Ivanovic, Terry, Silva, cold defense. अरे जॉन टेरी खुद ने किया था यार पोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है कि भाई imagine if I had played with Silva, like I really wanted to play with Silva. Again, I would also argue that by Carvalho was awesome as well. Yeah. Carvalho was awesome. I must say Carvalho was superb. One of the most underrated defenders of all time. मैं तो बोलता हूँ Carvalho. Not just Carvalho. मैं तो बोलता हूँ Gallus in his prime wasn't bad. लेकिन the way he left Chelsea wasn't good. Did you see Broya miss yesterday? हाँ, would you call it a miss? It was a मतलब horizontal foot volley था यार. And I know it was almost toe poked by him. लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक था डेरिन. आई वुडंट call it a miss. Yeah, Sachin यार more or less सबका ही यार. He's been carried the nation. Do you remember the legend of the underrated Obi Mikel? Of course यार, Obi Mikel. Again, to be very honest about it, जब वो Chelsea player थे, I used to not celebrate him as much because he used to kind of break up play. वो ज़्यादा करते थे. Even McAlely मैं तो बोलता हूँ. I didn't rate him as much when he was, signed for Chelsea in initial year के लिए. But towards the latter part of McAllister's career, I was like, no, boy, this is like a must in the team. और वही हम मिस करें आज के दिन में. For me, all time Virat Kohli, now Sky. Interesting. I also I will not lie. I actually liked Rahul in 2016 season. लेकिन वही है. Virat Kohli यार, it has to be the way just application. Oh, what a ball, man. रोनाल्डो was like no man, मुझे देना था बॉल, जस्ट मिस. क्रॉस था बढ़िया लेफ्ट साइड से, लेकिन आई हैव टू से भाई एरिक्सन हैज हैड अ ब्यूटीफुल मैच एज असिस्टेंट मैनेजर. नहीं, उसके बाद भी आई थिंक ही टुक अ कोचिंग कंसल्टेंसी जॉब यार विद चेल्सी. ही टुक अ विद चेल्सी जूनियर टीम. तो ही, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज ओके यूथ कोच. या exactly he's still that from what I know. But yeah, he's been trying different things, different businesses. I know that करते हैं भाई, मतलब after retirement they do a lot of things part time. So let's see. Okay, Varane almost having a kushti wala match. Goal, 100% goal. अरे what, Ronaldo missed that. 100% goal होना था ये तो. Come on man. कोई नहीं. एनीवे 2-0. एंड या उससे याद आता है भाई, स्कोर डाल दे अंकित भाई. 150 लाइक्स हो जाए होपफुली. लेट्स सी, लेट मी पुट द स्कोर. चलो, ओके. क्या हुए मैं खेलना चाहोगे मीनवाइल, फुटबॉल वाला? क्या बोलते हो? मैं कभी ट्राई नहीं किया वॉच अलोंग में थोड़ा सा हुए मैं. आई नो प्रॉपर अपना सीरीज तो चल ही रहा है, लेकिन काफी दिन हो गए, तो एक दो कर सकते हैं इफ यू वांट. दैट इज इफ यू वांट, दैट इज. वैसे तो मैच और रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये 2-0 है. अदर गेम्स अगेन नॉट टू एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट. देखते हैं दूसरे गेम में क्या हो रहा है. अगर मेरे टीवी में नहीं आ रहा, लेट मी चेक. ओके, आई एम जस्ट सीइंग व्हाट आई कैन गिव यू इफ एट ऑल आप इंटरेस्टेड हो. आई लाइक सहवाग मोर, आई डोंट नो व्हाई. या सहवाग वाज ब्रिलियंट यार, लेकिन पता नहीं यार, मे बी डरेन
आपने एक प्राइम सचिन, मैं तो बोलता हूँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल से दैट 2003 वर्ल्ड कप जहां पर उन्होंने शोएब अख्तर को मारा, वसीम अकरम को मारा, वकार यूनिस को मारा, दैट वाज प्रोबेबली द प्राइम सचिन. बट फॉर मी प्राइम सचिन वाज एक्चुअली इन लेट 90s. लाइक आई हैड गॉन टू अ मैच टाइटन कप का, मैंने काफी बार बोला भी है लाइव में, और आई रिमेंबर द एंटायर स्टेडियम खाली हो जाती थी यार सचिन आउट होने के बाद. और दैट वाज फॉर रियल. 1999 वर्ल्ड कप, सचिन्स डैड passed away, rest in peace, but he passed away, and then we lost to Zimbabwe. The पूरी team flat हो जाती थी यार. That's for real. He used to own things, man, on the pitch, of all the 22 players. 96 World Cup. Wow, what form he was in. That is why इतना disappointment था ना कैलकाटा में कि यार we didn't win the World Cup, we are out. Eden Gardens का. लेकिन that was how it was. लेकिन again people, दूसरा मैच में मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड, आई एम जस्ट लुकिंग है दूसरे मैचेस में क्या हो रहे हैं. भाई लाजियो लूजिंग 3-1. लाजियो लूजिंग. मिलिकोविच साविच हैज स्कोर्ड, लेकिन ओ मैन, मॉरिशियो सारी इन द मड. मिचीलैंड से हार रहे यार. ओ बहुत ही अच्छा ट्राई शरीफ का, चिप लेके नहीं हुआ यार. आई थिंक रशीद अच्छा ट्राई था लेकिन नहीं हुआ. लाजियो लूजिंग टू मिचीलैंड 3-1. वाओ. ग्रुप एफ का है ये, बाय द वे. फाइनवुड डूइंग वेल, मलाशिया का एक्स क्लब डूइंग वेल. बाय द वे, आप लोग ने देखा है मलाशिया और एंटनी का जो बेसिकली यू नो फाइट नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बहुत बार पीएसपी और फाइनवुड एक 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 आयाक्स और फाइनवुड एक दूसरे के साथ खेलते थे ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था इन टर्म्स ऑफ बेसिकली द क्लैश. चिन्मय इन द हाउस. चिन्मय कैसे हो भाई, लॉन्ग टाइम नो सी. चिन्मय फ्री हो तो बता दो यार, लिंक भेज देता हूँ. फ्री हो तो आ जाओ. क्या बोलते हो, लेट मी नो इन द चैट इफ अगर फ्री हो तो. टूनल या बिल्कुल यार. नाइस टू एक्चुअली सी यू चिन्मय. होप यू डूइंग वेल. बाय द वे, जैसिमाश बैंड फॉर वन मैच फाइनली. फाइनली सम सोलेस यार, थोड़ा सा इक्वालिटी आ रही है. डू यू थिंक सारी शुड हैव गिवन? नहीं यार, ही डिडंट एक्साइट मी यार, ऑनेस्टली ही डिडंट एक्साइट मी. इट वाज मोर लाइक सारी खुद भी जाना चाहते थे ना. इट वाज नॉट अ सैकिंग. चलो भेज देता हूँ. चिन्मय इज रेडी टू कम ऑन. लेट्स टॉक टू चिन्मय थोड़ा सा. और आप लोग को नहीं पता तो भाई, चिन्मय इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रा. ही नोज स्टफ व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड प्रीमियर लीग इन जनरल भी. सो लेट मी एक्चुअली सेंड द लिंक टू चिन्मय इन अ मिनट. और भाई उसी से याद है, सब लोग लाइक कर दीजिए. चलो आ जाओ यार, थोड़ी देर के लिए आ जाओ. बहुत हो गए, बहुत दिन हो गए बात किए हुए आपसे. भेज दिया भाई चिन्मय, आपको व्हाट्सएप किया हूँ मैं, देख लो आप. संकेत अच्छे है भाई, आप कैसे हो? अगेन लाइक कर देना. और संकेत और एवरीवन इन द चैट, हुएवर मिस्ड द अर्लियर स्ट्रीम, आज भाई बवाल स्ट्रीम थी, चेक करना जरूर. एबीएफसी में, दैट इज ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. तो वहां पर जरूर चेक करना, बिकॉज वी हैड सम क्रेजीनेस वहां पर. दैट इज चैंपियंस लीग रिव्यू. वी डिड रिव्यू चेल्सी, लेकिन नॉट जस्ट दैट, वी रिव्यूड अदर्स एज वेल. ठीक है. तो विद चिन्मय कमिंग, आई पुट ऑन द ईयरफोन, सो आई एम रेडी. चिन्मय आ जाओ. आ गए चिन्मय, आ रहे हैं. लेट्स ऐड चिन्मय. ये ब्रो व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है? ऑल गुड. यूरोपा लीग नाइट्स अब आदत हो गई है, बट हाँ वही, मैं लोग मुझे बैंटर कर रहे थे कि भाई आप आदत डाल रहे हो क्या, क्योंकि चेल्सी का भी अच्छा पोजीशन नहीं है ना चैंपियंस लीग में. हो जाएगा. मुझे लग रहा है हो सकता है वी माइट सी ग्रेहम पॉटर वर्सेस मैन यूनाइटेड in the Europa League, later stages of Europa League. I hope not, यार. I'm still hoping that we beat Milan over two legs. लेकिन भाई of course we'll be talking about Manchester United. I know you have just a few minutes, but what do you think यार? मतलब चेल्सी का there has been craziness going in the last few months, but last Not weeks needed. में तो अंकित भाई यही बोलूंगा, not at all needed. That new vision which does not match with Thomas Tuchel, not needed at all. What a manager. मतलब any club would love to have him. I know sometimes they say he cannot manage big egos. That's what they say sometimes. But I think 18, 19 months he had the job and he won you a Champions League. He came into the final of English final tournament. of every competition that he was taking part in. Exactly. And एक भी बार उसने मतलब दोनों सीजन में उसने टॉप 4 पे भी मिस आउट नहीं किया है. He gave you Champions League football. So I mean I don't really know why
अगर ऐसा होता, then Man United should have had about 15 managers in the last 10 Yeah. years or so, because we have not been at all stable. Now I know the thing about Chelsea, everybody says that is how Chelsea's run. They get new managers win, and then they get sacked. अब Jose Mourinho को अगर आपने sack कर दिया, then Thomas Tuchel, again. Hmm. But I never, after 2-3 draws, would I say that a Chelsea manager was likely to be sacked. I saw the news on Twitter in the So, afternoon. yeah, बिल्कुल. तो again, we have done multiple streams. I don't think you got a chance to check out those streams. लेकिन देखिए, again, for people who might have missed out, ना, like Chinmay, who might be busy. देखिए, it was not about football. It was not about soccer as Todd Bowley calls. It was all about basically like दो लोग काम करते हैं ना, आपस में बनती नहीं है. एक तो ये चीज थी. वो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं. सेकंड चीज ये है कि टॉड बॉली चाह रहे थे भाई आप उसके आसपास मंडराते रहो. What Todd Bowley wanted is like I am the guy, and of course Iqbali, Todd Bowley दोनों मिलकर, and they wanted the manager to basically be available for all the meetings, all the basically discussions, be a little bit more hands-on when it comes to basically off-field issues. और Tuchel is like भाई अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो मुझे फुटबॉल में देनी है, तो आई वाई शुड आई गो एंड डिस्कस विद समवन हु डजंट नो अबाउट फुटबॉल, व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस. अब प्रॉब्लम क्या हुई मैं बोलता हूँ, Tuchel actually is one of the best spokespersons. Like आप अगर follow किए हो, he speaks really well. He speaks very frankly, to the point. यहाँ पर Does not ईगो beat आया, around. यहाँ पर ईगो आया, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, टूकल 2-3 बार कंटिन्यूसली इंसल्ट कर लिया होगा कि भाई मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम मत खोटी कर मेरा, इनडायरेक्टली. Instead, he could have put that in a humorous way, the way that he put to basically, Todd Bowley and co. I think problem is from both ends, but decision clearly it's a knee jerk decision. मैं तो Look, टॉड the बॉली fans, के लिए मतलब जुड़ी. वैसे भी बात नहीं है. Of course, the fans will adapt to Graham Potter. They will also, start loving him after some time. But जो आपको कल reaction दिखा, the reaction परसों, if I'm not wrong, the reaction दिखा that everybody was actually supporting Thomas Tuchel out there. बहुत ही कम time ऐसे दिखता है कि fans are actually crying out for a manager after Yeah. he's sacked. नहीं नहीं, And मैं especially मैं the खुद मैं Republicans. खुद इंक्लूड चिन्मय. And देखिए मैं नहीं मुझे एक बोलूंगा बात दैट आई पसंद नहीं, डिडंट अंकित भाई, मुझे जो क्रिटिसाइज एक वो. बात पसंद नहीं आई. हाँ I saw हाँ. Thiago Silva posting. Yeah, he made a special, post for Thomas Tuchel. What about the other players? मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा लगा No, मुझे कि ये even they थोड़ा did यार. Everyone did. हाँ तो शुरू आई थिंक थियागो सिल्वा, चालोबा Thiago Silva एंड से ही हुआ है, one of the senior horsemen, of फोफाना course. ने But किया था शायद. नहीं नहीं देखिए, आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए नॉट again, एवरीवन हैज द गट्स. the players have to stay at the club. वो बात भी है, of course. Or Thiago Silva at this point, it's easier for him to do. Let's be honest, he's an all-time legend. Yeah, he's an all-time goat. So for him, it's far easier than compared to say someone who's kind of starting a few years ago. Like, and I hear you. There were players who were against him. It was very clear, especially a Ziyech, a Pulisic, You very surprising Pulisic. but I want to say this out loud. Hakim Ziyech might be against Thomas Tuchel. I saw his performance in the recent game. मतलब, I look at Chelsea as a big club. Does a big club really want to play like Ziyech right now? I don't know. उसको क्यों ऑफरोड नहीं किया गया, हो सकता है लॉजिस्टिक्स में कुछ नहीं यार, मिस्टेक वो हुई. बेसिकली अपना फॉर्म, कॉन्फिडेंस सब होता है खो ना, बैठा है वो. हर चीज, मोटिवेशन सब चला गया उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और एक और चीज होता है ना बीच में, इफ यू रिमेम्बर, मोरक्कन नेशनल टीम कोच से उसकी लड़ाई हो गई थी ना. Yeah, तो yeah. I think he's retired, if I'm not wrong. उसने रिटायरमेंट ले लिया था नहीं, देन after आई थिंक the देन इज अगेन मेड World हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर दिस वर्ल्ड कप नाउ. अब Cup. देखते हैं क्या होता है. I do remember there was a fight with the national team too. हाँ, लेकिन देखिए एक और चीज है ना, अब उसके बाद क्या हुआ था, जियेश, जैसे आपको याद है प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव विक्टर मोसेस बैक इन द डे. विक्टर मोसेस हैड टेकन अ रिटायरमेंट फ्रॉम Antonio नाइजीरियन Conte, टीम. Antonio Conte हाँ, times. and then he wasn't played in Chelsea, and then he thought, no, my time is over at Chelsea. I know we are comparing different players. उसके बाद, after he took retirement from Morocco, Thomas Tuchel hardly played him for the next 7 to 8 matches. तो उस समय I thought Tuchel got it wrong because we were anyway not in the reckoning in the league. तो वो 4-3-3 ट्राई कर सकता था, which is Ziyech's preferred formation. तो उस समय हाँ, but I don't agree with that attitude. That attitude is totally not wrong, especially he was a senior player in the dressing room. I think right now in football, most of the things is about attitude. सबसे Hmm. बड़ा एग्जांपल मैं मैन यूनाइटेड का ही दूंगा. फर्स्ट टू गेम्स आप देख सकते हो प्रीमियर लीग के, एटीट्यूड वाज मिसिंग, हार्ड वर्क वाज मिसिंग. दैट लिवरपूल गेम, if you talk on player to player quality basis, Liverpool is way ahead of United. At least 4 teams are way ahead. But जो बात थी एटीट्यूड का, United wanted to come into the game, actually wanted to win.
जो एक fire, जज्बा जो होता है, you know, they had that fire that we really want to show the Old Trafford crowd. It's all about attitude at the end of the day. अब Diego Dallo भी कभी-कभी, you know, he gives a Roberto Carlos type performance. Now, I'm not comparing both of them, but again, it is the kind of energy you bring into the game, the kind of passion you bring into अरे the game. रोनाल्डो विद अ चांस, नहीं नहीं कोई नहीं. बट हाँ, टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, मतलब अगेन विल कम बैक टू चेल्सी एंड एज वेल, लेकिन भाई क्विकली मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अभी, मतलब यूरोपा लीग तो Top four, जीतना है. we get top four. Expectation भी नहीं है. I'm pretty confident top four तो हो जाएगा. Europa League, if he अब तो break हो गया, Oh, that's why nice play maybe he यार. played this strong team. Oh, brilliant gameplay यार. मैन यूनाइटेड प्लेइंग वन टच फुटबॉल. Ten Hag ball. हाँ, मैंने तो भाई आयाक्स डेज में काफी फॉलो किया टेन हाग को, तो आई आई वाज लाइक नहीं, मैन यूनाइटेड आर एक्चुअली गेटिंग गुड कोच. प्रॉब्लम वही चेल्सी वाली चीज थी, ही हैड टू मेक श्योर अबाउट रोनाल्डो फैक्टर. वेयर आर यू ऑन रोनाल्डो यार, मतलब कैसेमिरो रोनाल्डो नॉट स्टार्टिंग योर मेजर गेम्स. Ronaldo, very controversial topic for Man United. But I feel now, whoever, you know, even if you're a United fan, अगर आपको problem है Ronaldo से, whatever said and done, he is in the squad right now. He is going to be starting more, you know, games, not most of the games maybe, but games. So I think now hating on Ronaldo is of no use. You know, that I don't see a point where fans actually start abusing a player, because at the end of the day, I don't think Eric Ten Hag will be benching him in all of the games. The next game for Man United, if people have not noticed because of this whole postponement, is Man City at Etihad. Erling या Haaland versus Licha Martinez. he है next game. तो बहुत ही बट तगड़ा. ओके, उस पर आई नो विल बी टॉकिंग अबाउट इट अगेन इन कपल ऑफ वीक्स टाइम. भाई Yeah, as much as Lisandro Martinez has looked one of the best signings until now, especially yeah, after those first couple of games, yeah. भाई दोज मैचेस Different जैसे level. ब्रेंटफोर्ड के मैच में थे, हाँ, जैसे मैन सिटी का मैच आने वाले, आई yeah. स्टिल फील दैट ही इज नॉट योर स्टार्टिंग सेंटर बैक. वुड यू डिसएग्री? But if not him, who? बात वो आ जाती है ना. Next year maybe you go for a new centre back, मतलब upcoming आई centre फील back. इज लिंडलॉफ इंजर्ड? Lindelof isn't injured, but on the thing is, Ten Hag has played with him. He knows the Ten Hag system. Left-footed centre back है जो United के पास नहीं था. That बैलेंस is one देता more है factor. विद Balance नहीं वरान. था. या And the biggest thing is, you know, I feel again, the back four. Even if you say defensively, Van Bissaka is way better than Dallo, way better. But the kind of football Ten Hag wants to play, वो वैसी बात होगी. The back four really supports it. I haven't seen them making a lot of mistakes. Arsenal वाले गेम में shaky लग रहे थे थोड़े, but at the end they, you know, did manage to keep Gabriel Jesus, a big threat, quiet. तो फिर देखते हैं, you know, he'll probably stick with this for till we probably don't get hit for 4 or 5 again by another team. या मतलब मैं तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई ऑलवेज मिस दैट ट्रेडिशनल यू नो टॉप फोर यार. मतलब आई हैव टू से दैट, मतलब मैन सिटी मेकिंग इट अ फार्मर्स लीग इज नॉट समथिंग दैट वी वर इवन. आप सोचो मतलब 10 साल पहले वुड यू हैव इवन थॉट दैट? नॉट रियली. इवन 10 years ago I didn't think about it Nobody would have thought. until that But Sergio Aguero moment came, no? one word I want to put out. One word I want to put out. Actually, two words I'll put out. Ole Gunnar Solskjaer 2020 had a very good chance to sign Erling Haaland when he was going to Dortmund. Uh, Solskjaer told Woodward pay 15 to 20 million. I think that was the kind of money they wanted, and Woodward said no, we don't know this player. Now you see the kind of player he's become, you know. And Ole Gunnar Solskjaer, being from Norway, he's seen him at Molde, you know, his club. He knew what kind of player Erling Haaland was. And next thing being Erling Haaland, well, he's a mad machine. I feel personally, Salah का record गया 32 है ना, if I'm not wrong. 30 कितना है? हाँ 32. वो तो मतलब एज पर द करंट रेट अगर कंटिन्यू करे ना, तो आई नो ही World Cup वोंट के पहले कंटिन्यू. he 60 can finish it before the World Cup. He can 60 finish it before goals. the World Cup. हाँ, World Cup के पहले ही वो finish कर सकता है वो रिकॉर्ड अगर करंट रेट पे चलते गए. Yeah, it's And just the that funny fitness fact थोड़ा is, सा इशू हो सकता है, but the that is the funny only thing. fact is, you know, जो लोग बोलते हैं कि अरे हम तो मजाक में बोल रहे हैं कि, you know, 50-60, ये ऐसा आदमी है कि इसको 10 मिनट में 2 गोल मार सकता है ये. He does not need 90 minutes to, you know, make an impact. He said it in his interview that I don't care about touches. I care about goals. 5 touches, 5 goals. That's my aim, and that is the best thing. You know the attitude, यार. See, that's what makes him different than say a horrible Lukaku that we had got. Attitude is totally You, different, यार. we had him first, sir. पहले हमारे पास था, फिर आपके पास गया वो. यार तुम्हारे पास फिर भी थोड़ा बेटर वर्जन था इन माय हाँ, थोड़ा ओपिनियन. बेटर वर्जन था. हाँ, एक्चुअली आपके तो आई थिंक हालैंड ने कितने 2-3 गेम में उसका टैली बीट कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक्चुअली वी हैड द बेस्ट वर्जन टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब हम एवर्टन को लोन किया था ना पहले, That was cold Lukaku.
वो Yeah. Lukaku को कोई भी, because he used to run at defenders and defenders used to be scared. And actually, for a fun fact, when he plays for Belgium, he actually brings that side of him outside. I don't know club level पे क्या होता है, उसको इटली बहुत ज्यादा ही पसंद है उसको, बट अब अरे इंटर वाले नाइस भी बॉल बोल रहे यार. हैं शायद. Talking about Ronaldo भाई. Oh, it should have been a goal. It should have been a goal. Ronaldo making a good run, and If he I think वो ये scores one Bruno more, by the way, Ronaldo, it's 700 club goals for him today. If he scores one more, he's on one more 699 क्या right अच्छा. now. अरे भाई बढ़िया यार मतलब अगेन मेसी रोनाल्डो भाई एवरीडे. आज भी वी आर स्टिल इन 2022 अभी. दे आर And स्टिल ब्रेकिंग you know, रिकॉर्ड्स यार. इमेजिन it's दैट्स द funny. रीजन दे आर गुड. Federer Nadal, which happened today. Federer retired. करेक्ट. Federer Nadal के बारे में लोग बोल रहे हैं. I am seeing everywhere on my Twitter, my Instagram, everybody. I am just think when one of Messi Ronaldo goes, it's going to be madness. A lot of football fans are going to cry that day. Football, when या sport fans, they're different inspirations for the fans. ओ या एवरी स्पोर्ट हैज इट यार. मुझे आज तक याद है जब सचिन रिटायर हुए थे ना क्रिकेट में. आई कुडंट काइंड Yeah, ऑफ डू एनीथिंग 2020. फॉर 2 days. Yeah, that was a very what dark. I won't say dark day because we did win that match against West Indies, but काफी काफी बहुत ज्यादा sad moment था. हाँ रियलिटी हिट्स यू ना मतलब वो वाला चीज ऑलमोस्ट कि भाई The मतलब अब last time क्या again the मतलब. interview. Even to some extent मैं तो इतना भी बोलूंगा even being a Chelsea fan मैं तो relate कर सकता हूँ when Lampard kind of went away, when Hazard went away, And these Lampard are. went to City. वो That was डायरेक्टली नहीं किया था वो तो खैर मतलब. आई नो आई डिडंट लाइक दैट फैक्ट लेकिन वो डायरेक्टली नहीं किया था. ही वेंट टू वन ऑफ द हाँ सिटी फीडर क्लब्स ना. क्या वो लोन से आया था ना न्यूयॉर्क. MLS से. या Ooh. हाँ मतलब ये. हाँ अगेन बट डजंट मैटर सीएफसी ब्लूज नो. ईदर वे Exactly. ऑल फोर Yeah, आर गुड्स. this is one point I want to bring out. नडाल ने पोस्ट किया है बाय द वे फेडरर के लिए. मेसी रोनाल्डो कोई पोस्ट नहीं करने वाले एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं. एक करेंगे व्हाट्सएप पे यार प्राइवेट. करेंगे देखते कौन करेंगे. ये मेरा नहीं. पर्सनल ओपिनियन है. मैं आज ही अपने आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, आज ही मैं बोल रहा था आई डोंट थिंक वो हाँ दैट राइवलरी डज नॉट हैव फ्रेंडशिप पर से. पता नहीं. इतना नहीं ज्यादा एक और रीजन भी है ना. देखिए फुटबॉल इज मोर लाइक अ टीम स्पोर्ट वेयर वर्सेस टेनिस. वहां पर जो पर्सनल नेचर जो होता है ना टेनिस में ज्यादा देखने को मिलता है मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. फुटबॉल का इज मोर लाइक टीम बैंटर मतलब दीज गो हैंड इन हैंड ना तो थोड़ा या सा ऑफ कोर्स. अलग है नेचर. फुटबॉल यू कैन नॉट रियली कंपेयर वही है. लेकिन आई एग्री विद योर देयर आर एवरी स्पोर्ट हैज इट यार. मतलब मुझे याद है मुझे आई यूज्ड टू लाइक इवन फॉर एग्जांपल किमी राइकनन एंड माइकल शूमेकर फॉर एग्जांपल. पीपल माइट रिमेंबर दैट. या माइकल शूमेकर तो आई स्टार्टेड वेरी लेट विद माइकल शूमेकर. तो मैं तो बैंड वैगन में आके आई स्टार्टेड विद हैमिल्टन. तो आई एम हैप्पी बट ऑफ कोर्स हर स्पोर्ट में होता है ये. देयर इज ऑलवेज दैट थिंग. बास्केटबॉल हैज इट, क्रिकेट हैज इट, फुटबॉल हैज इट. Everybody has legends when they go. Kobe Bryant का बहुत ही unlucky था the way he went. हाँ But of course. Yeah, quite every sport has. Darren has a question. Again, Zaha is an ex-United player, so good timing, Darren, of this question, bhai. Would you say, मतलब, being Zaha, I think it's probably time to make a big move, right? Again, मतलब, I know that Man United में हुआ था that he was a youngster at that point, no, like Depay. I feel honestly, I don't want any hate for this, but a player like Zaha, वो होते ना कुछ player जो at the small club का एक they create a name for themselves and they actually start playing well. When you say the word Palace, मेरे सबसे पहले दिमाग में आता है Wilfred Zaha. That's the first thing I think about. That Zaha with his tricky runs, fooling the defenders. I feel Zaha going to a big club. He's not a big club player, the elite competition player. He's the kind of player who will trouble defenders on a away day to Sellers Park. I think for him Palace would be good. Of course, if he makes that move, nobody is going to criticize him. Nobody is going to say anything. But at Palace, he is the most dangerous player. They play for him. They play with him. At Chelsea, at Arsenal, वो नहीं होगा. He'll be part of the process. He will not be the end result of the process. But इस बार ना बहुत सारे हैं. I like Mateta, Edson Edward. They are having some good forwards. They're doing exactly what West Ham was doing 1-2 years ago. Getting all these players trying to go ahead, trying to go up. एक दो result इधर से लेंगे and Patrick Vieira. All are physically, all are physical, and well he's a Premier League legend himself. यार मतलब Invincible का captain था वो. So looking at him, I'm pretty sure he knows how to manage a squad. Let's hope. मतलब I really want Rafael Leao यार. Not that I want Milan to get rid of him. I want Rafael Leao in both Milan and Chelsea. जो possible नहीं है. He's wow. बहुत ही difficult हो जाएगा वो. बहुत difficult है. A very reputed journalist already said बहुत ही early announcement that
Jude Bellingham is two teams transfer target, Liverpool and Manchester United, and one of those two teams is going to buy Jude Bellingham for sure next year. I नहीं said यार, very मुझे early. सॉरी टू से, लेकिन जूड बेलिंगम इज डेफिनेटली गोइंग टू वन ऑफ द चैंपियंस लीग टीम्स. But next year we will be in the Champions League. Don't worry about that. अब देखते हैं Being in the let's go. Champions League again, no हाँ, but disrespect, bhai. again, yeah, he's the kind Are of you player who favorites to win the Champions League next season? not I'm at all, telling not at you, all, top Champions League team. not at all. And that doesn't even include Chelsea. मैं सच बोल रहा हूँ. मैं I want him at हाँ, Chelsea. मैं तो बोल रहा हूँ Chelsea Manchester United, हम हाँ, like Chelsea Manchester United like भाई भाई यार, in terms of transfer window इस बार सच हमें में पता है. बारसा, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख. Barca got you over, Barca got us over. हाँ, Barca took all your targets, and Barca had they our will one and they will only still Haaland. वो होते रहेगा until basically we win, say for example a back to back Champions League जो होने नहीं वाला in recent future, तो मुझे यही लगता है Last year, anyway. I feel last year you guys made a very very big mistake. Winning the Champions League एक attraction था जो it could have been pulled. वो attraction से what you got Lukaku, and I still remember, I think debut था if No, I'm no, not we wrong. wanted Haaland भाई, but You उस you समय wanted, you wanted, Mino you Raiola. wanted, but getting is an issue. Mino Raiola, though, of course, RIP, he passed away. Yeah, But exactly. he was the kind of guy, he could do anything to get his own share of money. Hmm. Real are in the race for Bellingham, agreed, Yeah, but I feel they've already got a very very good trio to replace the correct. current trio. Current trio, तो Whom would he मतलब replace? Yeah, exactly. Casemiro तो चले गया, but I think they've already got star-studded 10 years with them. और next season Bellingham. I think Kamavinga is also expect to start, Saurabh, जहाँ तक मुझे हाँ, तो लगता है. Bellingham will not move to become a fourth midfielder in a three-man midfielder, या according दैट to me. इसीलिए, लेकिन वही है, लिवरपूल माइट चेंज द स्ट्रेटजी, जो जैसे क्लॉप ने बोला है ना, वी हैव टू Yeah, रीइन्वेंट. आई थिंक लिवरपूल ही लग रहा है मुझे फेवरेट. हो यस, सकता है. Now, biggest thing, राइट नाउ because डजंट फिट. बहुत लोग बोल रहे हैं, he is going to the World Cup, यार. I mean, anyhow, Jude Bellingham is going to the World Cup. He's been called up again today in the अरे last. गोल, ओ नहीं नहीं, बच गया यार शेरिफ का. भाई शेरिफ अच्छा खेल यार, मस्त से. अच्छा खेल रही है. Last week they had a good result, and last year also they had a good result against Madrid. लास्ट I ईयर तो think they were वही the only team. टॉक अबाउट रियल. या यू They were वांटेड, the या only team to beat हकीमी Real. हालैंड भाई टूकल के फर्स्ट चॉइसेस थे. देयर नो सीक्रेट्स मेड देयर, लेकिन हकीमी आई थिंक हिज वाइफ वुडंट Not वांट your टू fault, कम टू not your लंदन. fault. I'm not saying it's your fault. Yeah, what I'm trying to say is the attraction you could have done, the attraction या you had of the winning the Champions League. Ask someone like us, we जैसे have हम हज़ार्ड को लाए थे 2012 के बाद में, समथिंग लाइक दैट. us. मतलब, it is not the only reason he joined, but it was one of the big reasons. Champions Yeah, League winning. definitely it adds यार, it adds 100% ऐड करता है. PSG is also there, या PSG, लेकिन PSG के पास ऑलरेडी इतने सारे मिडफील्डर्स है सौरदीप. they've changed the midfield throughout. I I feel, doubt. I feel with Bellingham and Haaland, ये लोग आएंगे Premier League. They will boss the Premier League, and at some point, then they will move to, let's say, a La Liga or something. Bellingham Yeah, will they come to will the. eventually करेंगे. हालैंड और बेलिंगम eventually I think दोनों जाएंगे रियल मैड्रिड Bellingham साथ will में. come to Premier League first. Then he'll look for, and Haaland, though, I think written in stone है. I think Madrid है. I think अनलेस Benzema का. अनलेस एम्बापे से मेकअप हो जाए वापस. एम्बापे एम्बापे ने सबसे बड़ी गलती खुद ही की. सबसे बड़ी गलती हाँ, एम्बापे ने की वो कि he got over with he didn't Perez. get the right advice. In football you can go against anyone in life. I'm not telling you anything, ऐसा कुछ नहीं है. पेरेस के अगेंस्ट आप जाते हो तो उधर ही वो आदमी अपने क्लब के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड इट्स द ट्रूथ. ऑल्सो बाय द वे, अंकित भाई, सॉरी, बट एक सजेशन है मेरा. लुइस फिगो, द ट्रांसफर अफेयर on Netflix. Watch it and tell all your followers, all your subscribers, please give it a watch. Amazing. उसमें Pep Guardiola, Perez, everybody has given their insights on Barcelona to Madrid. It's on Netflix, 1 hour 45 minutes का. Amazing. That really shows what Okay, Perez. okay. That shows Perez का election where he came in. So it actually shows the kind of thinking he has to get Madrid up to the top. Interesting. अरे भाई, अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट गिविंग यार. दे नीड अ क्लीन शीट. दैट्स एक्चुअली वेल डन यार. एरिक टेन हाग इज अगेन, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस अभी तक, हु हैज बीन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर हु सरप्राइज्ड यू द मोस्ट यार अभी तक Surprised? दिस McTominay. सीजन? Any day. Because McTominay, as soon as Casemiro came in on the day of Liverpool, उसका announcement तभी हुआ था. I think I felt everybody around us, all United fans said one person's going out, McTominay, Casemiro coming in, team over, done, khatam. McTominay has been undroppable, and it's not even a joke. He's actually played very well. That Leicester game, I feel he was the reason we kind of won.
Casemiro also came on, but he was the reason we won. He's been rock solid and ability तो है उसमें. मतलब जोसे मरीनियो ने बहुत starting में बोला था when he started out McTominay's career that this kid is going to be special, but he probably McFred meme बन गया था वो तो एक with Ole Gunnar हाँ Solskjaer. वही जैसे बैक इन द डे जोन्स एंड स्मॉलिंग का था ऑलमोस्ट. हाँ, exactly. But I feel he's really surprised me a lot. बाकी लोग तो whatever said and done, they've done something somewhere to actually warranty a place in Manchester United. But with McTominay, people said Casemiro's here, Champions League winner. Please, you're going to the bench. He's not been dropped yet. So Yeah, fair enough. चलो anyways last few minutes left अभी of the match. what is your यार signing of the season? ये मेरे को पूछना है अंकित भाई. I'm स्टर्लिंग sorry मैन मैं अभी मैं के लिए शो पे स्टर्लिंग. बहुत दिनों से नहीं आया हूँ, इसलिए I'll ask you this question. या But डेफिनेटली यार मतलब it's your Almighty signing of the Sports Plus season, weekend. or not only for Chelsea but also in terms of the whole market, and you're not allowed to say Haaland. ये भी मैं बोल दूँ. चल, मैं वही बोला था यार ऑब्वियस आंसर अगेन. बस ये दो क्वेश्चन. ओके एवरीवन इन द चैट आप लोग भी बोलिए यार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हु हैज बीन अभी आई नो इट्स अर्ली ऑन लेकिन आई वुड आर्ग्यू दैट चुआमेनी क्योंकि आप देखिए इन हाइंडसाइट चुआमेनी दे हैव लॉस्ट कैसिमिरो द फैक्ट दैट चुआमेनी इज देयर गिविंग दैट और वो आई हैव सीन हिम अ लॉट. ठीक है आई वाज स्काउटिंग हिम बिकॉज हम बहुत लिंक थे इनफैक्ट आपको याद है तो सेस फैब्रिगास और पेट्रिचेक वर ह्यूज चुआमेनी फैंस. So we have been, as Chelsea fans, we've been scouting Haaland and Chouamani for a long time. Rice as well. So Chouamani for me has to be one of big shout है उनके लिए. लेकिन I think in terms of other than Haaland, मैं बोलूँगा तो I don't know maybe पता नहीं यार. What about I don't know maybe Anthony will be. I'm just saying it. Anthony will be. What do you think about Anthony? Anthony will be. I feel the kind of impact first 5 games, I might give it at least for the first 5 games Gabriel Jesus. I feel because if not Haaland, Jesus ने Arsenal के लिए कुछ तो create किया है. I feel when हाँ मतलब everything is flowing through him. I can Yeah. agree there. लेकिन And- यार and- आर्सेनल है ना इसलिए मैंने Jesus का नाम लिया because I know Jesus and Arsenal both. Consistency has been the problem over the it's years. the biggest issue. Why will Pep Guardiola leave a Brazilian striker for 40 million? कुछ तो issue होगा उसमें, and consistency is the biggest issue. ये signing of the transfer window और Chelsea, I think Chelsea के लिए बोल रहे होंगे if I'm not wrong. नहीं यार कुकुरेया फॉर मी सच में बोलो तो यार मतलब आई वाज एनीवे एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड. ऐसा नहीं है कि ही स्टूड आउट लाइक वाओ फैक्टर नहीं दिया डेरेन मुझे. लेकिन अगेन बिग अप आपका व्यू है तो आई विल टेक दैट. आई वुड से फॉर चेल्सी तो बाय अ फार मार्जिन इट्स स्टर्लिंग. सब लोग क्रिटिसाइज्ड स्टर्लिंग बट आई थिंक स्टर्लिंग हैज गिवन वैल्यू फॉर मनी बिग टाइम ऑलरेडी. He's actually performed well. Yeah. Sterling has done well, yeah, in my opinion. Chelsea are looking at Brentford head of recruitment, Lee Dykes. Okay, wow. Brentford has been good in recruitment, I must say, as well. Jesus has the most impact. लेकिन वही है मतलब do I see him continuing? I doubt it personally, but again, I might be wrong. Let's see. Chouamani is a Madrid fan, but Jesus also. I think Chouamani में जाऊंगा यार, honestly, apart from Haaland. Anthony will be, like I said, yes, Mr. Tata, I understand. Like again, मैं Dutch football काफी देखता हूँ यार. I feel that Anthony is the real deal. मतलब एंटायर समर जब आप लोग जा रहे थे ना फ्रॉम फॉर XYZ प्लेयर्स आई वाज लाइक व्हाई आरंट यू जस्ट स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन एंटनी रादर बिकॉज़ एक एलिवेट करेगा आपका लेवल. I think the thing with Anthony was, which I saw, that Anthony always since day one wanted to join Ten Hag. So player there was never an issue. Ajax को बस एक प्राइस, Ajax का भी कोई इशू नहीं रहता. They Anthony D में थोड़ा हुआ 2-3 days का. They give you a price and Ajax, and in terms of this Real Madrid, they give you a price, you pay the price, don't negotiate. Fair price देंगे, you pay the price, खत्म. There's no clubs like Dortmund, clubs like Barca, they start crying, this, that, and 5 million, 10 million, this, that. बिल्कुल नहीं. So I feel that is very good, and United were able to exploit both, Anthony and Casemiro that way. So good. Okay, by the way, if I remember right, Tanmay, it was Manchester United who was probably linked to Haaland at that Haaland point. था ना, Haaland तो था. United and Ole Gunnar Solskjaer really wanted him. I remember liking a tweet saying United will put in an offer tomorrow for Erling Haaland and it will be accepted. वो offer कभी गया ही नहीं. And I remember we played Salzburg as a friendly just after Haaland left to Dortmund. ठीक है तब उस समय मिना हुआ करता था. He was that supposedly next big guy. Yeah. And I remember him scoring.
अच्छा भाई डेरेन, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में पूछने का भाई, रॉबिन ड्रॉगबा और टेरी साथ में मत डालिए, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए. अगेन, if you really, if you put me in a spot, I'll say delete Robin, despite him being my favorite footballer of all time. Only reason because Drogba is a Chelsea legend and he lives Chelsea, yeah, literally. That's Drogba's the a only legend. reason. You know, Drogba Yeah, yeah. and Diego Costa are two Chelsea strikers who really they knew how to hold a play. They knew how to trouble and really get the defender, angry. And they used to, और they, बहुत they ही सरप्राइजिंगली चेल्सी का रिसेंटली हुआ यार, मतलब पहले तो वो व्हाट अ शॉट मैन नहीं, लेकिन छक्का मार दिया शेरिफ के प्लेयर ने. देखिए भाई, आपको याद होगा जिमी फ्लॉयड हैसेलबैंक, वी हैड yeah, क्रेस्पो, वी हैड ड्रॉगबा, वी हैड गुड जॉनसन. तो it was देयर यूज्ड टू quite बी a अ good टाइम एंड we had like wow strikers, man. exactly. Shevchenko, Torres. I don't know, off late we're not even pulling names. Lukaku, Yeah. yeah, you can say he was a name, like come on. It was almost like him coming back to Chelsea, But right? but the thing is, Ankit bhai, 110 million अगर किसी और पे भी डाल देते ना, you could have got someone else. मतलब Lukaku was not a player who you had to spend 110 million for. That kind of money would have bought you anyone, to हाँ, be honest. मार्केट वैल्यूज, दैट्स हाउ इट इज यार, क्या कर सकते हो बहुत उसका. बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था. Yeah, Maguire Bench का warmer, Maguire by the way, welcome to the stream, Bench warmer. If you've not checked out, looks like you've not subscribed to other channel. We have a main channel called Almighty Blues FC. It's always tagged in the description below. So consider doing that because we did have a stream of about an hour and a half today. उसमें पहले हाफ एन आवर हमने बात की है पूरी चेल्सी के बारे में, आज ही हमने किया है स्ट्रीम, just this evening. So do check it out, of course, and we'll come back to it as well. Do you think Osimhen is worth 100 million? Again, who is no worth any money at this point in time? सच में बोलूं no तो. 100 million no, not at all. Yeah, only reason is his injury. He's a very good player, तन्मय, don't get us wrong, लेकिन injury prone बहुत ज़्यादा है. अब वो हो गया है ना, मतलब to be honest, Anthony भी 100 million नहीं था, honestly. हाँ He हाँ, is a, 100 he's, million. he's a star कौन है यार player. 100 million अपार्ट फ्रॉम द गोट्स? कोई नहीं है सच में बोलूं तो, वो भी नहीं है I बिकॉज ऑफ mean, देयर एज. smart deals, they go. Everybody, all football fans should look at smart deals. If Erling Haaland, and I know, Mino Raiola ने बहुत कमाया है, even if he's, the passed away, the agents, and they've taken a lot. But to Dortmund, only 50 to 60 की range में, I think there's that amount, which has gone to release clause था. That is a kind of smart deal. And here, क्रेजी. 110 million people are talking about this player, that player. एंड इवन दैट, टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन भाई मुझे याद है जब टॉरेस को हम साइन किए थे 50 मिलियन में, 50 million from Liverpool. पागलपंती हो गई थी सब जगह, लाइक क्रेजी मनी. एंड लुक एट टुडे हाउ इट इज. इन्फ्लेशन एंड मैन. मुझे उससे ज्यादा हंसी ये आती है लिवरपूल ने क्या किया. मतलब दे बॉट सुआरेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद दैट मनी. बट एंडी एंडी कैरल दे कैरल. हैड. एंडी कैरल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. स्टुअर्ट डाउनिंग केम इन दैट डील, और वो एक साल पहले आया हुआ. आई डोंट रियली रिमेंबर वो नहीं, स्टुअर्ट वो डाउनिंग. शायद पहले आ गया था शायद, आई जहाँ तक थिंक वो मुझे एक याद साल है. पहले आए हुए थे. एंड बहुत ही, मतलब दुरुपयोग जो वर्ड है हिंदी में, हाँ, लेकिन बहुत सुआरेज तो यार ही डिड, आई नो ही Suarez लेफ्ट was a अर्ली. hit. Suarez was a hit. But then, it's funny because Suarez was part of the Barca team, which again mishandled the, Coutinho money, the Neymar money, I'm sorry. And, He was part of both the both the clubs like at that point. dominoes. Luke Shaw never fails to disappoint us. Devesh, come on, bro. Come on, bro. भाई लुक शॉ, मतलब क्या लगता है इंग्लैंड के लिए लेफ्ट बैक क्या होगा भाई? पीपल, जिनमें आल्सो इंग्लैंड फैन है, वर्ल्ड कप में भी हम I बात don't करने know. वाले He's been काफी. selected. Maguire's been Is selected. Ronaldo crying, by the way? Is Ronaldo? Crying or he's just tired? He's I think he's sweating, I don't tired. know. Why? He scored a goal today. कि मैं 700 गोल नहीं मार पाया यार, जस्ट फनी बैंटर, पीपल डोंट डिसलाइक. लेकिन हाँ, यार इंग्लैंड के लिए लेफ्ट बैक क्या बोलते हो यार? गैरेथ साउथगेट, क्या सिखा दो भाई He won't उसको. change. He won't change the ट्रिपियर, system. He ओ won't माय change. गॉड. मेरे हिसाब से वही फाइव एट द बैक खिलाएगा भाई. अरे यार कम ऑन मैन. वो शॉ चिलवेल का को चांस है. बैड लक मिल गया. चिलवेल हैज नाउ कुकुरेया. आई डोंट थिंक इज गोइंग टू स्टार्ट एवरी मैच. शॉ का चांस है क्योंकि आई थिंक डिफेंस तो आपका मगवायर स्टोन्स फिक्स्ड. राइट बैक यू आर लुकिंग. क्या हो गया क्या मैच? अरे बहुत कम है. जल्दी हो गया यार मैच. अरे पीपल, मैच इज डन. यस, कांग्रेचुलेशंस चिन्मय यार. तो मीनवाइल दूसरा मैच कब है आपका? आपके ग्रुप में हो गया क्या वो भी? हो गया ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, 12:30 को है. 12:30 ये तो अर्ली किक ऑफ था. अरे वो भी चल रहा है. रियल सोसिएडाड 2-1 जीत रहे. तो यू आर नॉट टॉप ऑफ द टेबल अगेंस्ट ओमोनिया निकोसिया, अगेंस्ट द सिप्रियन टीम. Sheriff beat. तो बेसिकली
हाँ, तो शेरिफ 3 points, Real Sociedad 6 points, and Manchester United 3 points. So I think it's important to get this away victory to Sheriff. Now, I'm pretty sure Uh, you are expecting to, at least qualify, if not top the group now, right? I think we'll top the group. I think we will. अब देखते how. कॉनर गैलेगर को नहीं Hmm. मिला. बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं मिला. मैं यूनाइटेड बायस नहीं डाल रहा हूँ, guys. Please do not hate on me. But I felt कहीं ना कहीं Sancho might have done something in the last 2-3 weeks. If not Sancho, Yeah, that was a Rashford, surprise. Rashford, Rashford put out a very very interesting tweet, by the way, which I feel अब ये थोड़ा गलत किया उसने. He क्या put किया? out a tweet saying that right now, but an hour ago, that you know proud of you, अच्छा, England boys who were आ selected. गया, मैं दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ, एक सेकंड में. आई जस्ट फाउंड दैट इंटरेस्टिंग वन. हाँ, या प्लीज प्लीज कंटिन्यू. So he basically announced himself part of the squad and said the only reason I'm not in the squad is because of injury. I don't think you should do that. That is kind of disrespect to the other players in some हाँ, इट्स way. ऑलमोस्ट लाइक विराट कोहली ऑलमोस्ट सेइंग दैट मैं ओपन करूंगा भाई इंडिया के लिए. मतलब तू हाँ, मैं होता कौन ओपन अपने आप करूंगा, बोल वो रहे. तो बस केएल राहुल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ओपनर हूँ एक्चुअली. हाँ, मतलब ऐसी बात. यू आर एंड टेकिंग फॉर ग्रांटेड. look at Toney, first column. So that is something big for him. I think he might get some game time. अब या इंग्लैंड के टोनी का तो गेम हमने ऑलरेडी बिग अप किया यार. मतलब ही प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट बिग टाइम यार. इंग्लैंड ट्रस्ट के मी. दोनों गेम वैसे बड़े हैं. एक तो जर्मनी है. हाँ, लेकिन अगेन आर यू टेकिंग देम सीरियसली? I could not hear that. नहीं, आर यू टेकिंग दोस गेम्स सीरियसली? I will have to. These are the last two games before the World Cup. Nations League को छोड़ दो. I'm इन not. I'm टर्म्स not. ऑफ I'm not. मोमेंटम, I'm not talking about Nations League at all. वो league तो या it इट्स is मोर just अबाउट hair गेटिंग table है. द. But I feel at least the last two games before the World Cup, not just us. Look at Portugal. Look at Brazil. If whatever the games they have, it is going to be very very important for the Portugal. ने आज announce कर दिया World Cup squad अपना. They have announced the World Cup squad and they've also announced one player each which will be available for Nations League. नहीं तो पोर्चुगल ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप का. ओह, सच में? आई प्रॉब्ली मिस इट. आई वाज स्ट्रीमिंग 2 स्ट्रीम्स किया ना आज, मैंने मिस कर दिया वो न्यूज़ आई थिंक. ओह यस ब्रो, दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेट्स एक्चुअली पुल इट अप. वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग मैन. अगेन पोर्चुगल हैव अ बिग बिग स्क्वाड. पीपल हु नो मैन, मतलब उनका जो टैलेंटेड है ना. आई थिंक आर्गुएबली विद फ्रांस दे हैव द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड विद फ्रांस ब्राजील ना. नहीं, सबसे ज्यादा टैलेंट है यार पोर्चुगल में. लेट With मी जस्ट पुल France, इट अप. ओके, सो पीपल, दिस इज व्हाट लुक्स लाइक द पोर्चुगल वर्ल्ड कप 2022 स्क्वाड, द नेशंस लीग स्क्वाड फॉर सितंबर. दोनों सेम है मतलब क्या? yeah, they've only named one player each for the Nations League game. And so they've announced the ओके, World Cup squad. तो जॉ कैंसेलो, डालो, मेंडेज, रूबिन डियास. ओके, अगेन हु आर द मिसेस? पीपल लेट मी नो इन द चैट, पीपल वाचिंग. अगेन काफी इंटरेस्टिंग है. Moutinho was one player I could not see. Joe या Moutinho. आई डोंट सी मुटिन्यो यार. आई डोंट सी मुटिन्यो. या मुटिन्यो हैज बीन मिस्ड आउट. Moutinho is not. Again, Matheus Nunes है, तो he is your next, kind of big, Yeah. person in midfield. Palhinha also, हाँ, Palhinha and Nunes are the next, thing in midfield for them. Simple as that. After Ruben Neves or William Carvalho तो है DM, और of course Danilo Pereira उनके खेलते. तो I think their midfield should be fine. Joao Maria Benfica भाई, again कल देखा था हमने. He was probably man of the match as well. So I can understand why, और वही है, he has experience. But Moutinho not being there थोड़ा सा surprised है मेरे लिए. सेमेडो, फैबियो सिल्वा. तो अगेन इतना सारा क्वालिटी है पोर्चुगल में, क्या बोलेंगे. चलो कोई नहीं भाई. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. लॉन्ग लॉन्ग काइंड ऑफ अ डे फॉर अस. डबल स्ट्रीम किए हमने. लेकिन अगेन कंग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. ऑफ कोर्स One thing I have हम to say, रिव्यू. congrats, Ankit bhai. Late night, whenever I switch on YouTube, I only see you are the only live person, and I keep अरे on looking at your FIFA streams. FIFA streams देखता हूँ मैं. So आपकी FIFA streams देख के तो मैं FIFA काफी is more entertained like a हूँ. stress buster for me. I'm like, okay, No, let's but do it. I get very entertained. I'm not even kidding. And I saw the season when you bought Ronaldo, and that was a very good season for you. And him along with Luis Diaz, as in surprisingly one देखा था मैंने. Liverpool Manchester I United think guy. I think there was just one game, Chelsea versus Liverpool, जब Diaz ने ही I think he gave you a 1-0 lead or something, and मैं आपकी reaction देख रहा था, and it was actually quite a good thing. अच्छा, Yeah, the yeah, FIFA stream FIFA was is quite a always debate. good fun यार. अगर हम करेंगे यार, all भी करेंगे. अभी तो हम भी mid season में. I've raised my level to world class. So hopefully this season I don't do bad that people are हाँ, expecting, but I चलेगा always come चलेगा back and win. चलेगा. Buy a new So keeper. we'll. That is all I will say. In हाँ, world केलोर class, नवाज है अभी के लिए.
in world class, saves are must. Goalkeeper अलग level होना ही चाहिए. मैं तो एवर्टन के साथ I started one, but I Everton being Everton level, then I just stopped. Yeah. Chalo, फिर nice stuff, and again congratulations to the winners of the Manchester United. Of course, Real Sociedad B. From what it looks like, almost हो ही गया है. लेकिन we might come back with Europa or Conference League 11 क्योंकि हमने आज किया था Champions League 11, so we might come back with that tomorrow. And of course, talking about tomorrow, there is some football in the weekend. Manchester United Chelsea के तो नहीं है, लेकिन I think Man City and other teams are playing in the weekend. तो हम करेंगे एक प्रीव्यू स्ट्रीम फॉर द वीकेंड एज वेल एज एफपीएल विल बी बैक. प्रेडिक्शन लीग इस वीकेंड में आई डोंट थिंक आई विल हैव बिकॉज इट विल नॉट बी फेयर. 7 मैचेस है ना शायद जिनमें इस वीकेंड वर्सेस Yes, 10. seven. So I तीन so postponed. yeah, prediction Including the league big one. people members I The doubt two it. big, Chelsea Liverpool हो गया and United Leeds. So both the United Leeds, derbies. yeah, of course. दोनों much awaited games थे. चलो कोई नहीं, we'll be back as well tomorrow. Chinmay, again thanks a lot, and everyone good night, see you soon, bye.